Okay, this should do the work. Okay. Very good morning, everyone. Sure, let's start the week. Now, today, what all we're going to talk about? Let's get a clear idea about it. Number one, we'll be starting with the concept of working with pandas. So that's the first thing. अब आज more or less language से ज़्यादा API पे बात होगा. So we'll be starting with pandas, then going with NumPy, then talking about how graphs can be plotted using Matplotlib. I'll be sharing certain notes in your classroom so that some extra information you guys have up to mark with you guys. Along with that, we'll be also talking about RE, that is regular expression, and how that can be used for various operations. So this is all what we are planning to do as such today. Major highlights, maximum highlight तुम लोग का होगा pandas and NumPy because उस पे काफी काम होता है. Should be going through with that. The first topic ही मैं चालू कर रहा हूँ pandas के साथ. So we'll be working with pandas and how we work operate that. Then we'll be following with NumPy, जहाँ पे randomization and matrix would be one of the highlight to work with. Graph plotting, I'll show you basic way of plotting graph, but remaining there are a lot of things which are possible. Notes and other things will be shared so that you can have a reference to go with it. And RE is a good to know topic because validation अब हम लोग string से नहीं करते, RE यानी regular expression से करते. So that's how the flow of today's lecture would be going. So more or less we are planning to end up with today's lecture with the entire slot and schedule. So let's hope for the best. Sure guys. Look at this. So now when you talk about pandas, what exactly pandas are about? Okay. Pandas is a package which is known for data handling. ये काफी अलग अलग तरह से कर सकता है. It can allow you to extract, add, filter data. So data add करना allow करता है, extract करना allow करता है, filter करना allow करता है. That's the basic thing. अब बहुत बार एक फनी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका टोटल जस्टिफिकेशन आप मैं कोई नहीं दे सकता, बट अगेन डू यू हैव अ आइडिया व्हाई pandas is called panda? I mean, you like that's name. One of the reason why it is called panda is because it deals with the text which is black and white, so they call it panda being black and white. Now nobody comes and tells me sir तो dolphin क्यों नहीं रखा, वो भी black and white हो सकता था. Let's not discuss that. पांडा इसलिए दिया गया बिकॉज ये टेक्स्ट बेस्ड डेटा पे काम करेगा, टेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो इसका नाम पांडास होता है. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स फर्स्ट थिंग. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट पांडा, पांडा सपोर्ट्स 3 न्यू डेटा स्ट्रक्चर. तो पांडा में 3 नए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वी ऑल नो डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है डेटा को स्टोर और एक्सेस करना. तो तीनों में एक एक अगर बात किया जाए, द सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल. इसमें से ये जनरली अब हम नहीं यूज करते, बट उसका काम डेटा फ्रेम भी कर लेता है. सर फर्क क्या है? 1D 2D 3D. ये जरा शांति से समझो. I'll give you time to copy. So पहले जरा let me explain, let me fill the entire thing. I'll promise you I'll give you 5 minutes specially for copying. So पहले से समझ. By saying 1D, this can be column based data. Based singular data. Sir, थोड़ा explain करो. Column based singular data. Array की जैसे, list की जैसे. 1D डेटा एक के बाद एक डेटा रखा जाता है, मोर और लेस कॉलम बेस, यानी कि एक कॉलम की तरह दिखेगा. We'll talk about data frames, kind of tabular data. Sir, tabular data in the sense of it is covered in rows and columns. Okay. Panel. ऑल्सो ज्यादा यूज नहीं होता, बट वी शुड नो इन केस कोई पूछ लिया तो. जनरली ये कोई पूछेगा नहीं, बट यू शुड नो. गुड टू नो इन्फो भी होता है लाइफ में भाई. सो दिस इज काइंड ऑफ 2D डेटा विद टाइम. मेक्स इट इजी. अब ये बोलना आसान है. दिस इज वेरी इजी टू राइट एंड वेरी इजी. हाउ वुड यू रिमेंबर, हाउ वुड यू विजुअलाइज दिस थिंग? सो आई ऑलवेज हैव माय आइडियाज टू वर्क विद. लाइक फंडा.
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग सब एग्जांपल्स में आ जाओ। तो लॉजिक इज सिंपल, मैं एक कॉलम का डेटा रखूं जहां तुम लोग सबके नाम याद रखो। इज वन कॉलम, सो इट्स अ सीरीज। फिर आपके कॉन्टैक्ट रखो, कॉन्टैक्ट सीरीज है, मे भी आपके ईमेल आईडी, दिस आर सीरीज, सीरीज, सीरीज। ठीक है, सुपर। तो सर ये ब्लू में हर एक चीज जो आपने बनाया सीरीज है। यस, टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो हर एक सीरीज तो है। सुपर सर, अच्छा है। When I combine this in a structure called student info, student, then suddenly the structure which we were till now banking, कि अरे अच्छा है, would become data frame. Why? Because now it's a collection of rows and columns. Super. अब तुमको लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट का या एक साल के स्टूडेंट का डेटा? If we talk about CDAC, like 1+, वो हर 6 महीने में एक नया मॉडल लाता है, यानी कि एक नया बैच लाता है. That's how we work with it. Yearly 2 batches, that's what we say. So the logic is simple. सर ये डेटा जो आप देख रहे हो ना, वो 2022 का है. सर मेरे पास पहले का भी डेटा which is for 2021. सर उससे पहले का भी डेटा which is for 2020. सर उससे पहले I can go on. 2019 का भी है. So when I talk about this, this is what panel can do. This is what panel can do. To putting everything together in a simplest possible way, the way I want you guys to understand is a concept. कि भाई तुम्हारे पास 3 तरह की चीजें हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल. डेटा फ्रेम अगर ऐसे बोलो तो one of the student has done this, not me, but very well sir. He asked this way, sir, n series will make one data frame. Yes. And sir, n data frames along with time will make one panel. Yes. So भाई ये भी एक कॉन्सेप्ट उसने जो बोला था काफी करेक्ट था. If you see, we have 3 series, name, contact, emails. जब उन सबको कंबाइन कर दिया तो मेरे पास आ गया स्टूडेंट इन्फो which is a data frame. फिर जब आगे गया ऐसे मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को टाइम बाउंड में अगर मैं कवर करना चाहूँ तो पैनल इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यानी कि दोस्त सबसे अच्छी चीज पांडास ये 3 चीजों पे काम कर रहा है. ये एक्सटर्नल पैकेज है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, बाकी की चीजें तो आगे होगी, बट बिफोर दैट ये 3 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है. द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट इज द जॉब ऑफ पांडा, कैन यू एलाबोरेट? It is used for data extraction, adding of data, data filter, and also it is used for representation, जिसे आप कहते हो visualization. The visualization of data, उसमें भी पांडा होता है. हाँ, पांडा बेसिकली डेटा देता है. फिर तुम्हारे पास मैटप्लॉटलिब जैसी चीजें हैं जो उस डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करता है. तो दिस इज बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन. So वहां पे भी मेरे दोस्त ये यूज होता है. So this is the entire story to start with Panda. This is step 1. People, as I promised, give you 2 minutes to copy, screenshot, whatever you want to do. Do that. You have the time. Parallelly, मैं collab link नया open कर लेता हूँ so that I can give it to you guys.
I hope people are done copying. Line collab है, टेंशन मत लेना, मैंने कुछ लिखा नहीं. Since we had a time, मैंने बैकग्राउंड में एक दूसरा collab line ready करके छोड़ दी. So they can work further. Everybody good to go? Done with this? Over? Any doubt? Any query? Anyone? ठीक है, चलो. In that case, let us start ahead. अब एक्चुअल सीरीज शुरू होता है या एक्चुअल काम शुरू होगा. अभी तक we were just discussing भाई ये है etc etc etc. Now the thing starts. Now when you say pandas, fine. The first thing is a series. Series बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. एक, आप लिस्ट दे दो, लिस्ट को खुद ब खुद वो सीरीज में कन्वर्ट कर देता है. सीरीज और लिस्ट काफी हद तक एक जैसे, दोनों डायनामिक है अपने हिसाब से, दोनों में डेटा वर्क कर सकता है. Speciality is series can be operated on a scalar mathematics. Now when I say this, machine learning या data science में whenever we say scalar mathematics, that's one question which everybody thinks about. क्या बात कर रहा है? A number which has to be multiplied by every element in your list. You cannot do that. उसके लिए आपको for loop run करना पड़ेगा if you know. So for I is और वापस वो manipulation. Now the good part about series is series इसके लिए बना है, so you can directly operate that. Plus series में अपने functions है जैसे कि min max sum, वो जैसे पहले था अभी भी है, you get the minimum maximum and other thing coming into picture. But before we do all this thing and we understand, the first thing we need to understand is the way we need to import pandas. तो चलो वहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं. We are still in pandas, mind you. The first thing you will be always doing, and a common interview question जिसमें तुम लोग goof up कर देते हो क्योंकि तुमने देखा नहीं होगा. So be very very careful. How would you import pandas? Everybody knows that. Everybody says, sir, simple है, देखो, you have to say import pandas as PD. Okay. This is a very nice and a cute statement to fire, but एक obvious question आता है. Import pandas as PD. Sir, what are we trying to do? PD is a alias for pandas. Sir, मतलब तुम्हारे घर पे नाम होगा कुछ ना कुछ, सोच लो. मेरे केस में अमर, एंड जो मेरे क्लोज वंस दे कॉल मी बीस्ट. सो लॉजिक सिंपल है, मेरा ही नाम है. तुम लोग को भी होगा ना प्यार से, लाइफ में कोई केमिकल लोच हो तो उन लोग को बहुत शौक होता है अजीबोगरीब नाम से बुलाने. थिंक अबाउट इट, अपना अपना सोच लो. ओके, तो similarly, what we are trying to do, instead of again and again activating pandas as a keyword, we have just made it PD. So anything which I want to work, when I say PD dot, it does understand as pandas dot. तो मतलब एक ही है, मैंने एक अलायस बना, मैंने एक अलायस यानी कि अल्टरनेट बना. ठीक है, सुपर, चलो, वेरी गुड. इंटरव्यू क्वेश्चन संभल के. People think an answer. Can I change this PD to any other variable, or can I change PD to anything else? Yes, no. Yes. People would answer. Yes. Intact. Yes. Yes. Okay. Sure. Everybody clear with that? Yes. Yes, sir. Okay. So remember this. Yes, you can do that. But हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा, जो यहाँ यूज करोगे वो यहाँ पे भी यूज करोगे. अब मैंने प्यार से इसको पांडु बोल दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी करना है वो पांडु डॉट डालो. याद रखो, it's an alias. If you're creating an alias, you have to use that alias no matter what and what not. I feel everybody is clear with this one. पंडा क्लियर हुआ? People clear? चलो, तो यहाँ से भैया आपका श्री गणेश हो गया. हम लोग ने बोला ओह, दिस इज हाउ वी वर्क. नाउ सीरीज का अगर कुछ बात किया जाए, सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट पे बात किया जाए, तो लेट मी कवर अ बेसिक थियोरी टू वर्क विद. सीरीज बनाने के लिए आपको
PD डॉट ऑब्वियस है बिकॉज PD से ही सब चल रहा है. सीरीज S कैपिटल है, भूलना मत. Followed by the list of elements. This is how you'll be creating a series. This is how you'll be creating a series. Now, when you work with, you can access series. Access series directly or using print. And उसका देने का तरीका होगा index element. सर क्या होता है? वो देता है 0 पे कौन है, 1 पे कौन है, 2 पे कौन है. So whatever we are talking about, वो इस तरह से एलिमेंट देता है. सर कंपलसरी इंडेक्स के साइड पता है? हाँ, उसके नीचे डी टाइप करके एक दिखेगा आपको, which is nothing but the data type. अगर सारे इंट है तो इंट हो सकता है, फ्लोट है तो फ्लोट हो सकता है, डबल तो डबल हो सकता है. अगर इनको छोड़ के कुछ तुमने मिक्स डाला तो इसका डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट. सर व्हाई? इट वुड बी सिंपली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टाइप which is capable of holding heterogeneous data. सर वापस अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो समझना तुम्हारा जो भी सीरीज है that is heterogeneous in nature. मतलब ये किसी एक डेटा टाइप को बिलोंग नहीं कर रहा है, मल्टीपल डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो जाता है because object can store any type of data. That is what we are trying to do. That is what we are trying to say. Hopefully people are clear with this. So sir, cannot I have a index access? That is enough. इंडेक्स एक्सेस तो होगा ही होगा. सो इंडेक्स एक्सेस मतलब सर वही ना, 0 से लेके सिमिलर. सो दिस विल ऑलवेज रिमेन, नोबडी स्टॉप्स यू विद दैट. अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टिल अंडरस्टूड बाय लेन स्टेटमेंट with whatever series you are giving, so that always remains. You have ये तो बेसिक चीज है. The more important part is the way we can operate, the way we can work. Scalar operations. Just to give you an idea, if I have let's say a number along with some operation, two let's say series, each element is operated. अब ये चीज समझने के लिए कुछ इस तरह से लॉजिक समझ लो. If I say 2 into, let's say, let's call L. मैं छोड़ प्रैक्टिकली कोडिंग पे दिखा देता हूँ rather than explaining. Fine. So scalar multiplication, scalar addition, सारी चीजें हैं. We again have slice coming into picture. सर क्या बात करें? वही जुना फंड. Start and कुछ चीजें अच्छी बात है इसमें, लोग चेंज हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होगा. So this still remains, यानी कि तुम लोग का step and other thing. Just for my reference, what command we used to give to reverse something? Anybody remember slides में कुछ दिया करते थे जिससे reverse होता था? Anybody could? -1. That still remains. So we know colon -1. याद रखना, अगर इंटरव्यू में पूछे सिर्फ -1 मत बोलिए, it is colon -1 to be very precise. तो सर वो क्या बात करते हो, अभी भी चलता है? हाँ, खुशी से चलता है. So we still remain, we still have the concept of sum, min, max on a singular data. मतलब एक ही टाइप के डेटा पे भैया ये चल जाएगा, फिर तुम कुछ और दोगे, will not be able to work. This is a basic thing to work with. This is a basic thing to work with in terms of series. Now एक चीज समझ के चलो guys, सीरीज हो गया, पांडास हो गया, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें चांसेस आर वेरी रेयर कि तुम लोग डेटा को इंसर्ट करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सम फाइल एंड देन वी स्टार्ट प्रोसेसिंग दैट. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा द वे वी प्रोसेस. इनफैक्ट जो हमारे फास्ट ट्रैक मॉड्यूल्स होते हैं उसमें तो सीरीज का हम लोग 2 मिनट बात करते हैं, भाई ये सीरीज है, ऐसे होता है, खत्म, एंड वी देन गो स्ट्रेट ऑन डेटा फ्रेम. बट आई वांट फाउंडेशन, मुझे क्लियरली बोला गया सर फाउंडेशन बहुत शांति से कराओ लोगों को, तो इसलिए वी आर कवरिंग. सर सीरीज मतलब आप यूज नहीं करते? 99.9% नहीं. सर क्यों?
भाई अपना काम है डेटा हैंडलिंग, तो डेटा फ्रेम में आता है, सीरीज में चांसेस आर लेस कि उसमें डेटा आएगा, बट खैर let us try to work with, let us try to operate. So the next thing which we'll be doing, as we all know, चलो इसका लिंक आप तक पहुंच चुका है, so you guys have the link. So people, let's understand. सर सीरीज बनाना है, ए भाई सब बाद में, पहले ये कर. So we'll say pandas as PD. तो मैंने pandas को ले लिया, pandas as PD आ चुका है मेरे पास. Now it is with me. पहला रन है, थोड़ा टाइम लगेगा. इफ यू वर्क विद, सिमिलरली मैं सीरीज बना के रख रहा हूँ, तो वी से pd डॉट सीरीज ब्रैकेट एक लिस्ट देना पड़ेगा. सो 11 22 33 44 55 66 मैंने एक सीरीज दे दिया. लेट्स रन इट ऑफ. एक वर्क करते हैं. क्या ये सच्ची सीरीज बना सर? पता नहीं, बेस्ट ऑप्शन. डोंट रिलाई ऑन मी, रिलाई ऑन पाइथन. तो पांडा डोस कोर डॉट सीरीज कोर सीरीज में से ये एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर बना. ओके सर, आपने बोला था ये डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है. डायरेक्ट एक्सेस का एक स्पेशलिटी था, याद रखना. ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज 0 1 2 3 4 5? व्हाट इज इट कॉल्ड? Index. बुलजाई पीपल, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल. सो हम लोग ने बोला सर वो तो इंडेक्स है. प्रिंट access, let's take it and let's play it off. सर दोनों में सीरीज एक ही आ रहा है, वही तो मैंने कहा था. कंपलसरी वो इंडेक्सिंग के साथ देगा. सो कैन वी यूज इंडेक्सिंग फॉर एक्सेस? यस, वेरी मच. like a normal list you can always put for index in range bracket len bracket s से तो len देगा ना. परफेक्ट. तो नीचे जाते हैं, फिर प्रिंट करते हैं. प्रिंट at index we have index. Let's play this. At 0 we have 11, at 1 we have. So index based access का भी अगर बात किया जाए, index based access का भी बात किया जाए, तो let's make it simple. Sir, can I have SS2? Yeah, go ahead. Because this is the only structure which will support this. Data frame इसको support नहीं करेगा. तो series अकेला है जो index based support करता है. लिख लो. Series is the only thing which support index. Series is the only thing which support direct index access. Direct index access से series support करता है. Okay. Before I could hit enter, nobody would answer. Type in and send me what do you feel would be outcome of this. Would it be 3 numbers, 4 numbers? That is a major question. 33 to 55. Sorry? वापस बोल दोस्त. 33 to 55. Okay, that's your answer. ठीक है, देखते हैं. Others can tap in. Type please so that I can understand कौन क्या feel कर रहा है. 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, because ये दिखाएगा कि तुम लोग ने कितना ध्यान दिया. मिक्स आंसर आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहा है. फिर पब्लिक को 3 याद आ रहा है, फिर कोई 4 बीच में आ रहा है. ओके, रनिंग इट ऑफ. रिमेंबर वन थिंग वाज टोल्ड टू यू. पाइथन है, जो भी बोलोगे वहां रुकेगा. तो जो भी बोलोगे -1 पकड़ के चलना, 4 नंबर नहीं. परफेक्ट. मर के इतने बराबर होला n-1. तो टेक्निकली व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इट विल बी ऑलवेज -1. अगर तुमने 5 दिया है तो 2 3 4 चलेगा, 5 पे तो वो रुकेगा मेरे दोस्त, भूलना मत. दैट्स अ बेसिक कांसेप्ट टू वर्क विद. सर वो रिवर्सिंग का अभी भी चलता है क्या? व्हाई नॉट? ये तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवर्स का. बट क्या सर ओरिजिनल पे अफेक्ट पड़ेगा? कभी नहीं. हम लोग ने देखा था ओरिजिनल को कभी फर्क नहीं पड़ने वाला. बी वेरी वेरी केयरफुल. सिमिलरली
We all know this. So we have sum of all the elements, we have minimum of S coming into picture, we have maximum of S coming into picture. सिंपल है. I mean सर ये सब बच्चों का काम है, हम लोग को आता है. अच्छा बड़ों का थोड़ा कम काम करते चलो. Now we have said of the screen, if you remember, min max है, start है, slice है, scalar operation. Okay. स्केलर ऑपरेशंस क्या है? अब इसका इंपॉर्टेंस दिखाना मैं थोड़ा उल्टा तरीके से करता है. जैसे मैंने कहा था ना, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा. तो पकड़ो 10, 20, 30 और ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पूछता हूं. ओके. अब मैं S को लेके आता हूं. S वी ऑलरेडी हैव, तो 2 into S. से पहले एक कोड ब्लॉक डाल रहा हूं. GoPro ऑन कर, वर्चुअल पे चाहिए मुझे पीछे बैक स्क्रीन. Okay, so now there are few things which I intend to do, few things which I intend to operate on. So अगर अभी का देखें, रुकिए यहाँ से कंट्रोल दे रहा हूँ. Just a minute guys, usual technical stuff. बैक स्क्रीन कोलैब ऑन कर, मैट्रिक्स ऑन हुआ है. Perfect, thank you. कैमरा फोकस है, सेकेंडरी लाइट बंद रखिए. Okay, so don't worry, I will be rubbing off. Now major question starts. Simple query है that wherever we work this way, whenever we operate this way, the most basic thing, एक लिस्ट दिख रहा है तुम लोग को जो मैंने बनाया, that is very much visible by now. ठीक है सर, वो तो लिस्ट है. दूसरा तुम्हारा सीरीज है. तो बिफोर आई कुड गो फर्दर, मुझे बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा, मींस व्हाट वुड बी दिस वन डूइंग, क्या होगा? एनीबॉडी? 10, 20, 30, again 10, 20, 30. ओके. रिमेंबर लिस्ट को अगर मल्टीप्लाई किया ना गाइस, वो खुद को रिपीट करता है. 10, 20, 30, 10, 20, 30 दो बार, 3 देते तो 3 बार रिपीट करता है. ये लिस्ट का भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. वी आर टारगेटिंग बोथ, वी आर टारगेटिंग बोथ. एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. ये रिपीट करता है. तो सर सीरीज क्या करेगा? भाई सीरीज वो करेगा जो अपने बहुत काम का है. कुछ फर्क दिखा? याद दिला दूं, तुम्हारा सीरीज ये था, दोनों देख लो तो शांति में. स्केलर, is this what we are talking about? Sir, why are we talking this much? Is it going to be so important? Yeah, I'll explain the most easiest thing. जिस वजह से आप देख रहे हो मुझे, या जिस वजह से इस तरह से देख रहे हो, that is all thanks to the scalar on pixel. सर मतलब I'll give you. मुझे इसका कंट्रोल दे. Now see the fun. इसमें एक क्रोम फिल्टर करके है, जिसके थ्रू तुम लोग मुझे इस तरह से देख रहे हो. तो अगर उसका मैं बिट वैल्यू, हर पिक्सल के लिए होने वाला प्रोसेसिंग चेंज करते जाओ, तो देखो क्या होगा. So this is exactly what is happening on every pixel. So you're able to see me or able to understand me is thanks to the way we work or thanks to the way we operate. And this is the reason it is important. Sir, मतलब नहीं समझा, आप थोड़ा गुल हुए और वापस आए. उसमें हुआ क्या? It's a pixel based processing. और ये करने के लिए तुम लोग को यूज करना पड़ता है, ये करने के लिए तुम लोग को यूज करना पड़ता है पॉइंट टू पॉइंट मैथमेटिक्स. अब ये जो पॉइंट टू पॉइंट मैथमेटिक्स होता है, वी वर्क इन अ वेरी सिंपल मैनर. हम लोग एक पिक्सल वैल्यू लेते हैं, उस पिक्सल वैल्यू पे प्रोसेस करते हैं. जैसे कि मेरा करंट केस में इट्स अ ग्रीन कलर विच आई एम टारगेटिंग. और यही चीज अगर मैं मैनिपुलेशन पे डालू, एक मिनट वापस पैनल दे जल्दी. सो व्हेन वी टेंड टू, सॉरी मेरा मिस्टेक है. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ये करने में मैंने इसका सेटिंग हिला दिया. ओके, सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट गाइस, इफ अगर मैं कोई पिक्सल वैल्यू लेता हूं और मैं बोलता हूं नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अ पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू, देन इन दैट केस मेरा जो भी प्रोसेसिंग होगा,
मेरा जो भी प्रोसेसिंग होगा वो पर्टिकुलर पिक्सल पे ही होगा, एज यू गाइस कैन सी। थैंक यू, बहुत बैंड बजा। Okay, so this is exactly what we do with scalar mathematics. अगर एक पिक्सल वैल्यू लिया है, जो मेरे स्क्रीन पे अब मैंने ब्लू रखा है, सिर्फ मुझे अभी एक नहीं समझा कि वो मेरे बाल क्यों पिक कर रहा है, बट ठीक है, whatever it may be, but that's a blue pixel value which I am talking about. So practically how things goes is anything which reflects would be targeted. इस तरह की चीजों में हम लोग scalar mathematics यूज करते हैं। अगर आप में से कुछ आगे by normal भी कर ले। So when you tend to talk about when you work with the basic, we operate. Thank you. When we work with the basic, this is how we operate. तो हम लोग एक पिक्सल वैल्यू लेते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और उस पर काम होता है, and that's exactly what this kind of mathematics. This may feel very small, यार कौन सा बड़ा बात है, but ultimately हम लोग पिक्सल पे वर्क करते हैं। एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है स्टूडेंट साइड पे, सर पिक्सल ना, ये और पिक्सल का क्या लेना देना? All the processing, all the filters which you will ever see, या OpenCV पे अगर काम करो Python यूज करके, you will understand ये सारा mathematical चीजें फ्रेम पे होता है। फ्रेम is a collection of pixels in row and column. Every pixel will have RGB triad, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों के पिक्सल वैल्यूज होते हैं, और मैं जो भी प्रोसेसिंग करता हूँ उन पिक्सल वैल्यूज पे ही तो कर रहा हूँ। अब मेरा पिक्सल वैल्यू जब ग्रीन पे था, अभी जो ग्रीन पे है, तो यू आर एबल टू सी मी वेरी क्लियरली, और ग्रीन पीछे दिख रहा है। बाद में क्या हुआ, मैंने पिक्सल वैल्यू यहाँ का ब्लू पे पिक कर दिया, तो एनीथिंग रिफ्लेक्टिंग दैट कलर रेंज उसने वो उड़ा दिया और तुम लोग को बैकग्राउंड ग्रीन दिखने लगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। तो पिक्सेलेट या पिक्सल बेस इंफो OpenCV में सीरीज का हम लोग कभी कभार यूज कर लेते हैं फॉर गिविंग सम स्पेशल इफेक्ट्स और गिविंग सर्टेन ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, याद रखना। सो दैट इज हाउ वी वर्क और दैट इज हाउ वी यूज दिस थिंग, सिंपल येट इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग। ओके, अब भैया सीरीज बहुत हो गया। नाउ दिस इज व्हाट वी स्पोक अबाउट सीरीज एंड वी कैन वर्क विद। अब हम लोग बात करते हैं CSV फाइल। हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड CSV फाइल? कितनों को मालूम है कि CSV फाइल एग्जिस्ट करता है और CSV फाइल क्या है? Comma separated values for the parents. Comma separated value, very good. Other than that, okay, people first understand industry standard के हिसाब से this is a new thing which we started working in, and it's a blessing. We have a CSV files. So CSV is comma separated value. It can be a normal text file, but a normal text file is arranged in row and column in a very unique way. सर मतलब ये एक तरह से टेक्स्ट फाइल है बोलने के लिए, बट कुछ इस तरह से। अगर मैं कहूँ यार मुझे ना अमर इस तरह से चीजें चाहिए, जहां मैं कहूँ आई हैव अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट, आई हैव देयर नंबर, आई हैव देयर ईमेल, ओके, तो मेरे पास इस तरह से एक फाइल चाहिए। तो उसमें हो सकता है अमर 98 समथिंग, अमर एट समथिंग। तो ये फाइल एक टेक्स्ट फाइल की तरह मुझे दिखेगा। सर मतलब इंटरनली आई बी हैविंग दिस स्ट्रक्चर इंटरनली। अगर मैं CSV का बात करूं तो CSV फाइल का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। सर क्यों? बिकॉज द वे CSV ऑपरेट्स इज क्वाइट डिफरेंट। CSV के पास कुछ ऐसे होगा, जब आप CSV फाइल ओपन करोगे, नेम कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ना, नंबर कॉमा ईमेल कॉमा, वो हो गया। नेक्स्ट, फिर वो स्टोर करेगा मे बी अमर कॉमा 9821 कॉमा अमर 2 at something at कॉमा, यानी कि सर internally this will be treated as a file. Yes, in fact the advantage of working with this which you would soon understand is you can use it using Notepad or any text editor. You can even prepare it using Excel, or you can also use any other software that you want. अब why am I banking so much onto CSV file या क्यों CSV file बड़ा कर दिया है, is because its ability. Nowadays CSV is treated as a database concept. So ये database की तरह या एक टेबल की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो सर एडवांटेज क्या है? Without any database.
ओहो, मतलब सर डेटाबेस नहीं चाहिए? नहीं, और डेटाबेस जैसे एक्सेस मिलता है। हाँ, another advantage why I personally love Panda is because Panda ने जो life easy कर using CSV direct code without SQL. If you ask me, yes, I do train people for SQL. If you ask me, sir, do you like SQL? मतलब छी, बिल्कुल नहीं. I mean, somehow I never enjoy working with SQL. I mean, database is not my forte, neither I like. हाँ, प्रोजेक्ट है, नीड, डिजाइन, एग्जीक्यूशन में बहुत बढ़िया कर लेता हूँ. बट इफ समबडी आस्क्स मी अमर डेटाबेस और कोडिंग, मैं बोलूंगा नहीं, प्रोग्रामिंग अपने को जमता है, को डेटाबेस नहीं चाहिए. हर एक का चॉइस होता है, हर एक का लाइकिंग होता है. तो मेरे जैसों के लिए, जिसमें से 90% ऑफ पॉपुलेशन आएगा प्रोग्रामर्स का, जैसे यार ये कोड ऑपरेशन करते बैठना ना बहुत मगजमारी होती है. तो ड्राइवर्स लोड करो, क्वेरी बनाओ, सीक्वल का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सो एंड सो लिखो, फिर वो जॉइंस करो, ये हमसे ना हो पाए. ये डायरेक्टली होता है, मतलब विदाउट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ सीक्वल तुम लोग डायरेक्टली इसे ऑपरेट कर सकते हो, और वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन के सामने आता है. दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Okay, now the first thing first, how would you create this file? I personally would use Microsoft Excel for making this. तो मैं भाई MS Excel यूज करूंगा बनाने के लिए. कैसे, क्या, क्यों, वो मैं दिखाता हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. You can even use Notepad and other thing for it. So up to us to work, up to us to operate. तो पहले CSV फाइल बना लेते हैं. So अपने अपने मशीन पे एक्सेल होगा तो यूज करो, या तो गूगल का स्प्रेडशीट भी चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. यू गाइस कैन डू दैट. है एक्सेल तो अच्छी बात है, मैं भी एक्सेल ऑन कर रहा हूँ, क्लिक कर चुका हूँ. बट एज अ माइक्रोसॉफ्ट प्यारा सा टेक्नोलॉजी, वो सोच विचार के चालू होता है, इतना इमीडिएटली चालू नहीं. So I'm even waiting for it to respond as such. Still waiting. आज एक्सेल कुछ सोच विचार के चल रहा है, वो भी मंडे मॉर्निंग मोड में. इसका मंडे ब्लूज मेरे मशीन का अभी तक खत्म नहीं हुआ शायद. Still waiting. सर एक क्वेश्चन था. Yeah, go ahead. सर जो आपने अभी मल्टीप्लिकेशन का बताया कि इसमें जो स्केलर ऑपरेशंस, जो बाकी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, उसमें वो कैसे परफॉर्म हो जाता है? All mathematical operations are done as scalar only. ओके. और सर जैसे अपन लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो लिस्ट डबल हो गई. अगर सीरीज को डबल करना है तो? सीरीज को डबल नहीं, फिर सीरीज को जॉइंस करना पड़ता है. You have to join a series with another series. You can do that. Okay, thank you. Okay, most welcome. Okay, people, on my Excel, you should be able to see all my screens as of now. So let's take a blank workbook. So I'm clicking on it. मैं स्टेप्स में जा रहा हूँ, थोड़ा इसे जूम इन कर लेता हूँ. फुल स्केल जूम इन पे हूँ मैं अभी फिलहाल, डोंट वरी. सो नाउ आई विल गो टू ए. मैं बोलूंगा भाई मुझे चाहिए नाम, नंबर, या तो चलो सिंपल रखते हैं, जेंडर, सैलरी. ओके, this is what I want. So I'm saying AAA, male, salary 90,000, BBB, female, 20,000, CCC. अगेन zigzag कर रहा हूं मैं सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ. 40,000. ओके, ये सिर्फ इतने डाले. More important is now what I'm about to show. People pay attention to. File, save as. Now you would save it wherever you want to. So I'm doing in documents as such. The most important thing to understand is click. You have an option to this. You have a lot of option in CSV, MS-DOS, CSV, in terms of is. What I personally always use, UTF में बहुत बार error आता है, तो I generally like to use is a common format called CSV, delimited. बहुत सारे types है CSV फाइल में, इसमें delimited is what I generally use. उसमें आज तक प्रॉब्लम नहीं आया. तो ये डॉक्यूमेंट्स में चला जा रहा है मेरे, बोलता है माय डेटा. ओके, मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गया.
Sir, fine, but what are we trying to refer by this? What are I trying to refer by this is more important. So just a minute, I'm starting with my documents. So here goes documents. Document में my data करके होना चाहिए. So let's see. Okay, my data.csv. So I'll right click, open with. जरा मजा देखना. Notepad. Sir, क्या कर रहे हो? Notepad. Why do you think मैंने कहा था ये किसी भी एडिटर के साथ चल जाएगा? It's the exact data which I enter. और वही डेटा. तो सर एक मिनट. तो ये उसका ओरिजिनल फॉर्म है, वो ओरिजिनल फॉर्म है. This is the original form, but when you give it to Excel उसे visually अलग तरह से represent कर लेता है. That is the reason it looks different. Otherwise, yes, the basic format. If somebody say, what is the core format? What is the core format is what you can see right now. लो नोटपैड में ओपन किया तो भी वैसे ही दिख रहा है. यानी कि सर इन शॉर्ट ये दिखने में लुक वाइज अलग दिखता है. सिर्फ एक्सेल, हाँ एक्सेल उसका प्रेजेंटेशन बेटर करके देता है तुम्हें. So it will still look like this. It will still look like this. Only thing is उसका look and feel Excel improve करके देता है. So this is a CSV file to talk about. CSV file क्यों important होता है? See, as you start developing project, you will understand sometimes working with database can be very hectic and troublesome. Q. I remember one of the project which my team had handled is Dalal Engineering Works करके है. They have an office in Thane. Now ये बहुत अच्छा प्यारा सा engineering firm है. अलग अलग लोगों ने उसे टेक ओवर किया या अलग अलग एडमिन्स आए. सबने अपना अपना डेटाबेस. The company started back in somewhere in 70s. तभी उनके पास टेक्स्ट डेटा था. फिर उन लोग ने किसी को पूछ के फॉक्स प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर था, वो डेटाबेस था. फिर दे शिफ्टेड टू एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट का एक सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. देन दे फिर उसका बेटा है. देन दे शिफ्टेड टू ओरेकल. Then I don't know for what reason they shifted to MongoDB. When my team and me entered, तभी एक हम लोग को problem आया. The first thing they said, sir, we have database everything right from 70s till now, but we have different database. 5 साल, 6 साल, 3 साल अलग-अलग database में. We wanted everything centralized so that we can understand the growth and we can do analysis and all. अब मेरा team कम से कम 15 मिनट हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख के हंस रहे. क्यों? Because मुझे Fox Pro के लिए अलग drivers चाहिए, Oracle के लिए अलग चाहिए, Mongo के लिए अलग चाहिए. Sybase भी था उनके पास. तो there were a short period they have even I don't know why they use Sybase also. Sybase के लिए भी था. And so problem क्या था? Every database operator has his own database driver and has his own driver way of working. Super. यानी अब मेरा काम या मेरे टीम का काम था SQL इंजेक्शंस बना के अलग अलग तरह से डेटा उठाओ और एक कॉमन डेटाबेस में इंजेक्ट करो. अगेन दैट वाज एट अ क्वेश्चन मार्क. व्हाई? We were asked that time it was 12G, तो 12G यूज करो, Oracle यूज करो, क्लाउड पे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. होते होते एंड तक they were like, why can't we use purely cloud services ले लेते हैं. No, sometimes मजा आता है ना, क्लाइंट जब बहुत ओवर एंथ्रो हो ना, ये भी यूज कर लेते हैं, ये भी यूज कर लेते हैं, तभी मुसीबत होता है. तो इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था अलग अलग डेटाबेस के फॉर्मेट. सॉल्यूशन CSV. अगर मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट डेटा जिससे मुझे प्रोसेस एनालाइज या वर्क करना है, CSV से बेटर कुछ नहीं हो सकता. क्यों? ये डेटाबेस प्रॉपर्टी देता है बिना यूजिंग एनी डेटाबेस टेक्नोलॉजी. सो यू डोंट हैव अ एक्स्ट्रा लोड ऑन योर मशीन फॉर रनिंग अ सर्वर लाइक SQL सर्वर, Oracle सर्वर या कुछ. But this can actually give you all the functionality. This can give you all features of database, allowing you to make a CRUD operation, that is create, update, read and delete without taking care or without issuing a single line of SQL command. Believe me, there are different type of programmers who love hitting on commands like SQL. Otherwise, most of 90% population से 80% population जो programmers मुझे मिले हैं, जब भी बोलते अरे SQL, reason वो जॉइन सोचो, ये सोचो, it takes time to get a hand on it. एक बार hands on भी आया ना तो भी people won't be happy. वो कमांड लिखो, फिर डेटा आएगा, फिर सोचो. So we generally play smarter with CSV. So CSV एक तरह से database access देता है बिना getting worried about actually working with the database operation. This is the bigger thing which we are talking about. So CSV का importance इसलिए discuss करा. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे you'll understand report generation, summary, log files, ये सब आजकल CSV में बनते हैं. Why? CSV is a kind of a format which is independent to anybody.
कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम इसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, इंक्लूडिंग योर डेटाबेस सिस्टम्स, मेकिंग इट मच पावरफुल, बेटर एंड मोर वर्सटाइल टुडे. So that is the reason CSV is important. Everybody clear? एक CSV फाइल अपने अपने मशीन्स पे बना लो. एक CSV फाइल अपने अपने मशीन्स पे बना लो. I would make a request. एक CSV खड़ा कर लो अपने अपने मशीन्स पे प्लीज. Just to have a practice, just to have a idea कि क्या, क्यों और कैसे चल रहा है. Just to get a firm idea about it, guys. That's the reason we are working. That's the reason we are operating. People once over and comfortable, give me a go. Similarly, if some people fail in understanding or जिन्हें file चाहिए, keep this file. In fact, everybody can download and keep it. एक फाइल है जो मैंने भेजा है, मैं वापस भी भेज रहा हूँ. डोंट वरी, ये डाउनलोड करके रखोगे, इस पे मैं प्रोसेसिंग करवाना शुरू करूंगा. You can just keep it. Again, I have sent it. डाउनलोड करके रख लो. You will need this. You will need this. Any doubt, any query up till now? Because we are just talking about CSV, we are just warming up. पहले तो CSV लोड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा फर्क है. If you are using Colab, तो तुम्हारे 2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे. If you are using Jupyter book और a normal Python, तो तुम लोग को अभी जो स्टेप सिखा रहा हूँ वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Make it a clear understanding. Colab यूज कर रहे हो तो ये एडेड स्टेप है. Colab यूज कर रहे हो तो ये एडेड स्टेप है. आई थिंक मैंने सबको भेजा है. Okay, वापस एक बार सेंड कर रहा हूँ. People, make it a point that you get this file. So people, one more time I'm sending the file. मैं CSV फाइल ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ. जो मोबाइल से लॉगिन है उन्हें नहीं दिखेगा. अगर लैपटॉप से लॉगिन है तो दिख जाएगा. मैं और एक बार वापस वही फाइल भेज रहा हूँ. डाउनलोड एंड कीप इट. आई होप एवरीबडी गेट्स इट. ओके. नॉर्मल एक फाइल है जिसमें कॉन्टैक्ट और डिटेल्स डाले गए हैं. नॉर्मल फाइल है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सैलरी डिटेल्स डाले गए. Okay, so people be ready with this. Will be needing or will be using this. Okay, everybody downloaded the file and kept it ready. Chalo. Now going with the next in terms of working. थोड़ा मेहनत है. Now mind you, जो steps मैं अभी दिखा रहा हूँ guys, these are precisely working for your Colab. अगर आपको पास कोलैब के जगह पे आप जुपिटर बुक यूज कर रहे हो तो ये करना नहीं पड़ेगा. आपका लोकल पाइथन, पाइचार्म या पाइथन आईडीएलई है तो ये करना नहीं पड़ेगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं पड़ेगा. सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू गेट दैट. सो ठीक है सर क्या करना है? तुम लोग को कोलैब को लोड करना पड़ेगा. ये फाइल को लोड करना पड़ेगा. तो फॉर दैट वी विल बी वर्किंग विद फ्रॉम यू आर सपोज्ड टू लोड दिस फाइल फ्रॉम गूगल कोलैब. सो वी विल से google.colab. आप कोलैब में लोड कर रहे हो. सो इंपोर्ट द फाइल. इंपोर्ट फाइल्स. अच्छा मतलब सर आप गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल्स कर रहे हो, फिर क्या करना है?
अब तुमको फाइल लिखना है तो फाइल लिखो, या अपलोड लिखना है तो अपलोड लिखो। अपलोडेड आप पे है, फाइल इज इक्वल टू, अच्छा अपलोडेड फाइल, सर उसका क्या करना है, फाइल्स लाए ना, फाइल्स डॉट, नाउ यू आर अपलोडिंग, अपलोड। जैसे ही ये रन करोगे ये प्रॉम्प्ट ओपन करेगा जिसमें तुम लोग को ब्राउज करके डिटेल चूज करना है, फाइल देना है। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होगा, दिस इज स्टेप 1। अब फाइल को कोलैब में लाने के लिए, फाइल को कोलैब में लाने के लिए तुम लोग को आईओ करना पड़ेगा, तो दैट इज अगेन इंपोर्ट आईओ। इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग ये करते हैं, तो इंपोर्ट। अब क्या करना पड़ेगा, अब जहां पे तुम लोग फाइल का नाम लिखोगे वहां पे तुम लोग को डालना पड़ेगा io डॉट, बिकॉज वॉट एवर वी आर गोना यूज इज फ्रॉम io। फर्क है इसे बाइट्स io में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट्स, mind you bytes io, because whatever we are reading that has to be converted to bytes so that it gets uploaded, downloaded and work with। तो क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा from the system। Now be very careful, now be very careful, if you are sent uploaded file, so this would go accordingly, uploaded file square bracket, you now have to specify name of the file which you have given, जो भी आपका फाइल का नाम है .csv, क्लोजिंग, वर्किंग, तो ये करना पड़ेगा। अब अगर तुम लोकल मशीन से वर्क करो, अगर आपके पास आपका लोकल मशीन है और कोलैब नहीं यूज करो, जुपिटर बुक या पाइथन, पाइथन, पाइथन आइडियली यूज करो, तो कुछ नहीं, तुम लोग को सिर्फ नेम ऑफ फाइल लिखना पड़ेगा। तो सर ये 2 स्टेप्स करने का जरूर नहीं है, नहीं, बिकॉज हम लोग के केस में हम लोग यहाँ पे डॉट रीड अंडरस्कोर CSV कॉल करते हैं। तो अगर तुम्हारा लोकल मशीन है तो तुम लोग डायरेक्टली उसे डॉट रीड अंडरस्कोर CSV कॉल करके काम हो जाएगा, so that can be worked without any problem, that can be operated without any problem, so that is how we work। सर ये PD ये तो ठीक है, मैंने थियरी लिखा, जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर। जरा खुद हम लोग ये प्रोसेस कर लेते हैं, खुद ये प्रोसेसिंग लेके आते हैं। तो चलो, जस्ट टू सी whether we are able to load or not, let's go with this, you guys can parallelly do that, या मेरे साथ करो। so now coming back as we work with, हम लोग को पहले वो फाइल रेडी करना है। so from google colab dot import files, so from google dot colab import file, so that is what files are going to be doing, they will be importing the data। अब उसको uploaded file is equal to, तुम लोग को यहाँ से फाइल डॉट अपलोड करना पड़ेगा, files dot upload। तो सर इससे क्या होगा, बस we are taking a file, so as you can see on my screen it is asking choose a file, so I have to click, I have to choose a file from some place। So we will be working with, let's say we'll go with D, talking about this, and I think that I should exist in my Python folder, yeah। So book data is getting loaded, तो मेरे फाइल का नाम है यहाँ पे book data.csv, ओके। सो नेक्स्ट, अब इसे ये अपलोड हो गया यहाँ पे तुम्हारे स्पेस में, एज यू कैन सी। तो सर उसे यूज करने के लिए, हाँ, यू नीड टू इंपोर्ट दैट थिंग टू योर फाइल, सो इंपोर्ट io, सॉरी, इंपोर्ट io, एंटर। अब तुम लोग को यूज करने के लिए इसे pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट, अब उसको भी कहीं डेटा फ्रेम में लोड करना पड़ेगा, तो लेट्स कॉल इट ds। रीड CSV में तुम लोग को बोलना पड़ेगा जो IO का डेटा आपने लिया है, तो IO डॉट, वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन इट, तो हम लोग ने जैसे यहाँ पे बात किया बाइट्स IO पे बात करेंगे। सो एज आई वाज वेटिंग फॉर बाइट्स IO ब्रैकेट कमिंग इन,
Now in that uploaded file, ये कौन सा फाइल होगा? जो फाइल आपने ऊपर लिया है. तो I'll be taking this reference and saying uploaded file square bracket. अब फाइल का नाम अनिवार्य होगा. So you have this book data, और वही लिख रहा हूं मैं. In fact, we have book data dot csv. तो भैया ये गधा मजूरी किया. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये सब बराबर से हो गया? पता नहीं सर, कैसे पता करेंगे? df. If the file gets loaded like this, your job is done. In fact, you will understand इसके दो स्टाइल्स हैं. एक df जो अभी आपको दिख रहा है, df जो अभी आपको दिख रहा है, एंड अगर जोश में आके प्यार में आके तुमने बोला अमर प्रिंट करना, मजा आएगा, इसका लुक एंड फील चेंज हो जाएगा. So सर ये df डायरेक्ट है, टेबुलर मैनर में दिख रहा है. ये it is seen as a collection of lists basically. तो थोड़ा look and feel अलग है, as you guys can see. But yes, this is what. So I want everybody to try all this and give me done. जब तक मेरे स्क्रीन पे majority done नहीं आता, मैं गिन रहा हूँ, counter is on. So tell me once people have done, I would understand people are ready with it now. As I can see, पहला आ गया साहिल से. I'm waiting for others. इतना करके ready करो, इतना करके ready करो. I'm waiting. Load this file and keep it with you because मैं इस पे process करना शुरू करूँगा. Be quick. सर अगर मुझे जुपिटर में ओपन करना है तो वो फाइल जुपिटर में सिर्फ वो फाइल को अपने स्पेस में लेके जा और सिर्फ इतना पार्ट देगा तू. रीड csv. That's it. थैंक यू. People, be quick. People, be quick. Yeah, go ahead. समझ में कैसे करें? Collab use कर ले अभी. Then we'll do one-on-one for Jupyter. Don't worry. पहले अभी कर ले because we need to go through a lot of processing. Parallelly, let me help you off with that Jupyter. Jupyter में क्या error आ रहा है? सर उधर फाइल का लोकेशन एग्जैक्ट देना पड़ेगा. हाँ, फिजिकल पाथ देना पड़ेगा. तेरा फाइल कहाँ है बच्चे, मालूम है? क्योंकि आपका डाउनलोड में जाता है, तो यू नीड टू देन गो थ्रू द पाथ एंटायरली. सर वो बोल रहा है पीडी नेम इज नॉट डिफाइंड. इंपोर्ट पांडास किया बच्चे? नहीं वो
सर पहले इंपोर्ट पांडास किया, बाद में इंपोर्ट आयु, बाद में वो पीडी रीड सीएसवी आईओ बाइट्स वो भी करना है। एक मिनट, तू कोलैब यूज कर रहा है या जुपिटर यूज कर रहा है? जुपिटर। तो फिर का शल मैं चिल्ला के क्यों बोला? ध्यान किधर रहता है रे तुम लोग का? वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी आर डूइंग पाइथन बाय द वे एंड आई एम मोहम्मद पंचाल। तेरी तो मैं पहले ही बोला दैट दिस टू स्टेप्स वुड बी रिक्वायर्ड प्रिसाइसली विद कोलैब। यहाँ लिखा भी है कि तुम लोग डायरेक्टली इस स्टेप में करेगा। क्यों? Make it a point that people you get it. Be good. Chalo, majority are able to do, as I could see, the count has increased. Good to see that. Oh, that's good. चलो, so I can say major. समझा तो जुपिटर बुक में तुझे वो नहीं करना पड़ेगा. See, you realize one thing. कोलैब में इस कमांड से मैंने लोकल फाइल को अपलोड किया. वो अपलोडेड फाइल को मैंने बाइट्स में कन्वर्ट करके मेरे कोलैब के करंट नोटबुक में लोड किया. सिंस जुपिटर बुक में एवरीथिंग इज लोकल टू डायरेक्टली रीड कर सकता है, सिर्फ तुझे पाथ देना पड़ेगा वो कहाँ है उसका. समझा? ओके, मोर डन कमिंग इन. अच्छी बात है. Okay. That hits around 48 people coming in. I consider majority is done. So भैया यहाँ तक तो हम लोग ने सिर्फ लोडिंग का बात किया. We haven't done anything beyond this. तो अभी भी चालू रखो जो कर रहे हैं. मैं थोड़ा बाकी का डिस्कशन कर रहा हूँ. Now there are few steps which you should be ready. अब जो मैं करूंगा भैया वो कोलैब हो, तुम्हारा जुपिटर बुक हो, तुम्हारा बेसिक पाइथन हो, इन सब में चले. So now what are we talking about? Let's get few details done. People can keep on giving me done. जिनका जो हो रहा है अच्छी बात है, so that I can understand तुम लोग का क्या हाल है, कैसे है. Now let's understand few stuff about how we are going. So we understood one thing. Sir, DF डाला ना, तो सारे rows and columns. Perfect. That is how it is supposed to. और ऐसा नहीं हो रहा तो तुमको तकलीफ होना चाहिए कि अरे क्यों. So that is one way. And sir understood. मतलब simple है वो तो. अगर आप DF कॉलम का नाम डाल तो हम सिर्फ सीरीज पे आ जाए. सर मतलब एक सीरीज दिखेगा, तुम एक सीरीज दिखेगा. व्हाई डू यू थिंक मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बोला था सीरीज और डेटा फ्रेम इंटर रिलेटेड, एंड दैट इज द सेम थिंग. बट व्हाट इफ यू नीड मल्टीपल? सो देन देयर इज वन वे ऑफ वर्किंग विद DF. स्क्वायर ब्रैकेट नेम ऑफ कॉलम. अब जब इतना लिखता है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैज वन थिंग इन माइंड. सर तो दोनों एक ही चीज है ना. ये डोंट यू थिंक दिस इज बेटर? दिस कैन ओनली ब्रिंग यू 1 day. दिस कैन ब्रिंग यू 2 day. सर नहीं समझा. तुम्हारे पास मल्टीपल कॉलम है तो भैया यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है तुम्हें. यू कैन से कॉलम 1 जो भी उसका नाम हो, कॉमा 2 एंड सो ऑन एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. अच्छा मतलब सर इसमें वो नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते. सो दैट रिमेन्स. तो मतलब सर कॉलम नहीं कर सकते, राइट? More interesting thing which I love about this, you can directly do calculations on it. Sir, मतलब अगर मैं कहूँ anything, any calculation you want to do एक particular part of series पे करना चाहिए, तो ये format तुम use कर सकते हो. So any calculation, let's say a variable is equal to certain calculation which you want. So DF dot certain column name into multiply divide some value. You can very well do that. तो मतलब सर जो भी आएगा ऐसा सीरीज मिलेगा. हाँ, you can get that.
more interesting thing for me is what if I want to do it in the data frame itself. मतलब ये तो अलग से print करेगा. What if I want it in a data frame? So then in that case, if I variate from this and I say df followed by single double quote either thing, new column. So that can also be done using df dot. Value. So this is something new which we can work with. This is something new which we would appreciate in terms of it. So ये दो मैं करके दिखा रहा हूँ. Apart from that, when you go, okay, one interview question is, अगर तुम लोग को list करना है सारे columns in a data frame, list all columns of a data frame. डेटा फ्रेम. तो उसके लिए याद रखना हर बुक में लिखा है फॉलो. क्यों? वेल वो मैं करके दिखाता हूँ, एक एक प्रोसेस करके दिखा. Another thing to work with. अरे सर ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स देगा, तो what if I really need other details of it? What if we need other details of it? Second thing, ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स देता है, तो क्या we have index access? ये याद रखना, index access to data direct is not possible. Direct index access possible नहीं है. तो सर क्या यूज करते हैं? There is an option called .loc method. अब ये .loc method है जिसमें आप index access दे सकते. So this is the index access for this. मतलब सर जो भी i is loc में दोगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते सर जैसे पहले लिखते थे अच्छे से df of 0. नहीं, you are not allowed, you cannot do that. तो डायरेक्ट अलाउ नहीं है, but otherwise this can do. It is also used very commonly in label printing. इतना ही नहीं, since we are talking about it, सर सब मैंने कर दिया, ये सब आपने सिखाया, मैंने सीख लिया. अब मुझे इच्छा हुई कि चल भाई सब कुछ सेव करना है. Can I do that? Yes. There is a simple command called df.to_csv. जो भी आपको नाम लेना है लिख लो, खत्म. सर ड्यूमिंटू से डायरेक्टली सेव कर लेगा. इसका ताकत इतना ज्यादा है कि you can directly do that. Second thing, using this concept of working, we also call this phenomena as subset. अब ये सारी चीजें क्या है, ये तो मैंने जस्ट बात की कि बस हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया and we worked with it. But now question remains, ये सब का ताकत क्या है या कितना है. मैं एक एक पॉइंट एक एक तरह से दिखा रहा हूँ. तो ये पहला वाला तो आई फील एवरीबडी इज वेरी क्लियर एंड सीन. रोज एंड कॉलम, तुम लोग ने डीएफ लिखा है तो डीएफ दिख रहा है. ओके, सो अगेन बाय प्रथा अनुसार मैं अब जा रहा हूँ. सो ये अपना फाइल था, एज यू कैन सी डीएफ लिखा, रो एंड कॉलम सब दिख रहा है बराबर. नथिंग मच टू टॉक अबाउट, नथिंग मच टू ऑपरेट अबाउट. अब थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं. व्हाट इफ सर आई नीड लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स. अब कॉलम का नाम राइट होना जरूरी. सर मतलब this. So this is a list based data. तो मैंने सिर्फ नाम लिया. सर तो नाम और कॉन्टेक्ट सपोज चाहिए तो many of us would think this. सर बट मुझे सारे कॉलम के नाम नहीं मालूम सर, आधा अधूरा मालूम है सब मुझे. ओके, सो यू आर इन ट्रबल. क्या करूं? कॉलम के नाम जानने के लिए क्या करोगे? और आई इन df print I. This is very interesting and very useful. मुझे कॉलम के नाम नहीं मालूम ना, तो ठीक है, this is the name of the column. याद है मैंने कहा था, मैंने तुम लोग को कहा था, ये बहुत बार आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन.
Can you list all the columns of a data frame? मैंने लिखा है for loop. वो for loop क्यों लिखा था? Let us understand. वो लिखा गया था इस काम के लिए. इसने क्या किया ध्यान से देखो. उसने रिकॉर्ड डिटेल डेटा नहीं दिया मेरे को. उसने क्या दिया तुमको? उसने दिया सारा डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ नेम, कॉन्टैक्ट एंड सैलरी. याद रखिएगा. थोड़ा और आगे जाते हैं. Everybody clear at this point? Yes, no? Waiting for question? Anyone? ठीक है. Step 2. Sir, subsetting. Subsetting. Yeah, let's call it subset. Sir, subset कैसे बनाओगे? 2 square bracket compulsory. Name है. I don't want to give them contact detail. I just want to give them salary. अच्छा, मतलब सर नेम और कॉन्टैक्ट सिर्फ आपने डीएफ ये दो दे दिया. Congrats. So this is subset. अगर database language में कहूँ तो creating a view. I can give you one more effective thing which you will be happy about. अगर मैं बोलूँ भाई अमर अकाउंट वाले को ना सब मत दे, सिर्फ नाम दे और फिर सैलरी दे. And you play. Similarly, जो टेलीकॉलर्स है उन्हें भी सब मत दे. उनको सैलरी देके क्या फायदा अमर? तो मैं बोलूंगा एक काम कर, उनको तू कॉन्टैक्ट दे एंड नाम दे. तो कांग्रेट्स, यू कैन डू दैट. कॉन्टैक्ट. सो इफ आई एम प्लेइंग दिस, बट सर कुछ दिखा तो नहीं. नहीं दिखा नहीं, काम हो गया. As you can see, उन लोग के पास सिर्फ नाम है और सैलरी डिटेल है. Similarly, we are smart people. सर अकाउंट तो हो गया. So this is how subsetting is possible. Subsetting is possible. तुम either cases में उसे तोड़ सकते हो और वर्क कर सकते हो, making it very very interesting to operate or very very interesting to work with. Everybody clear till this? Yes, no? Yes. Okay. Now one of the most interesting thing which it is capable of. Okay. What if I am telling you, Amar, tax calculation करते हैं, tax paid सबके लिए. सिमिलर देख डीएफ का सैलरी उठा इनटू 10%. तो सैलरी इनटू 0.10 इज द टैक्स पेड. फ्लैट रखते हैं. सर कुछ नहीं हुआ. नहीं हो गया, सीरीज रेडी है. $1,200, $1,400, $2,000, $5,000, depending on the salary. Now I'll tell you something very very interesting for this now. Sir, what if I want to add this detail to my currently data frame straight away? ऐसे करो. So you'll call it tax equal to df dot salary into 0.10. सॉरी, दो इक्वल टू आ गए. सर क्या टाइम फिश कुछ नहीं हुआ? नहीं, कैलकुलेशन हैज बीन डन. एंड इफ यू वांट टू सी द फन, ये चीज अगर डेटाबेस में करने जाओ ना, मजा आ जाएगा तुम लोग को, बिकॉज इट विल टेक इट्स ओन स्वीट क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, अल्टर. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बोलता है ठीक है, आई एम डन. You give me name, contact, salary and tax. I'm done. I'm sorted with it for the day. Superb, काम हो गया. अब सर इतना सब किया, I want to store it back.
If I play, सर कुछ नहीं हुआ. Now since ये कोलैब है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. फाइनल स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया है, but ठीक है. You can always go click on download. मैं नीचे का CSV फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ. CSV फाइल पे क्लिक किया है तो my Excel should come ahead. प्रोसेस डेटा तुम्हारा यहाँ पे सारा डेटा इन टर्म्स ऑफ किसने कितना पे किया, कितना अमाउंट है, एक्सेट्रा 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 आके रुका है. सो वी हैव सैलरी, टैक्स एंड एवरीथिंग इन दिस. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ व्हिच पांडा कैन डू. व्हाई? हम लोग ना सबने डेटाबेस ऑपरेट किया ना. वेरी श्योर डेटाबेस देखा होगा, फिर थोड़ा प्रोसेस किया होगा. ये करना ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है बिकॉज डेटाबेस के सारे चीज विदाउट एक्चुअली वर्किंग विद डेटाबेस. तो अभी तक हमने क्या देखा? रो कॉलम, 1D, व्यूज, सब सेटिंग जिसे मैं कहता हूँ, लिस्ट ऑल कॉलम्स, वर्किंग विद, ये छोड़ दो. फिर मैंने बोला ऑपरेशंस, फिर मैंने कहा नया कॉलम डालने के लिए और टू CSV. ओके, गिव यू 5 मिनट्स. कोलैब लिंक जरा शांति से एक बार देख लो. गिव यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स में 2 मिनट्स दे रहा हूँ सोचने के लिए कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्यारा सा क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क. 2 मिनट्स, आई एम ऑन द स्टैंड बाय. देख लो, फाइल्स देख लो, कुछ रहा पूछ लो. अभी तक मैं कुछ नहीं समझा तो पूछ लो. 2 मिनट जस्ट टू फॉर दैट. Go through any question, people feel free to. हेलो सर, Yeah, go ahead. कॉलम ऐड करने का थोड़ा बता सकते हैं? Sorry. कॉलम ऐड करने का, कॉलम कॉलम ऐड करने का. ओके, अब समझा. एक्चुअली वॉइस वाज नॉट क्लियर. एक मिनट. देख, सिंपल है. तुझे जो भी कॉलम चाहिए, जो भी कॉलम तुझे ऐड करना है, उसका नाम लिख, जो नया कॉलम होगा, और उस पे जो भी प्रोसेस करना है या जो भी मैथमेटिक्स या प्रोसेस करना है उसे. तो इसमें क्या होगा, पर रो जो भी यही करेगा, जैसे कि तेरा फॉर एग्जांपल कुणाल है, कुणाल का सैलरी लेगा, उसे इंटू 0.10 करेगा और जो भी आंसर आएगा वो टैक्स के रो में ऐड कर देगा. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. तो ये करके पूरा तेरा डेटा रेडी करके DF में एंटर करते जाएगा. दैट्स हाउ वी वर्क विद. क्लियर दोस्त? यस सर. मोस्ट वेलकम. सर वो लास्ट वाला स्टेप बताइए ना. वो DF लिखा तो प्रिंट होता है, मतलब इसमें नहीं समझा. क्या बताओ? वो हो गया, वो एक्सेल शीट में आया था ना बाद में लास्ट में. हाँ, ये वाला df.to_csv. इसमें देख बच्चे, एक समझ, तूने जो ओरिजिनल अपना डेटा फ्रेम था उसमें सब चेंजेस किया हम लोग ने, ये नया स्ट्रक्चर बना. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू सेव दिस? इफ आई वांट टू सेव दिस तो मुझे सिर्फ एक कमांड है, ये इंटरनल to_csv. अब जैसे ही ये करेगा, अगर तेरा जुपिटर बुक है या नॉर्मल पाइथन है तो तेरे हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा. बिकॉज ये कोलैब है, ये इसके क्लाउड पे ले रहा है. तो यहाँ से मुझे सिर्फ एक मेहनत लेना पड़ेगा. रुक, पहले तो ये स्पेलिंग चेंज करने दे. तो फाइनल डेटा करके है, मैंने ये रन किया तो यहाँ पे देख एक फाइनल डेटा नाम का चीज ऐड हो जाएगा. रिफ्रेश करो, आ गया देख फाइनल. तो सिंपली उसको अगर मैं बात करूं डाउनलोडिंग का, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे जाके डाउनलोड बोलना पड़ेगा बिकॉज कोलैब है ना, ये क्लाउड है. और फिर जब तू उसको क्लिक करेगा तो एक्सेल खुद ब खुद ये डेटा लेके ओपन कर देगा. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. क्लियर बच्चे? यस सर, थैंक यू. मोस्ट वेलकम यार. So this is what we did, guys. This is what we did. This is step 1.
यहाँ तक का मेरा काम था, अब तुम्हारा बारी आएगा. So I'm just waiting for that. Everybody clear till this point? समझा? Any doubt, any query? How can we add the column at a specific This is yet to location? do. Wait, kar. We are doing just filtration, right? We'll be doing adding also. Don't worry. Just wait. Okay. Apart from that, anybody? No doubt, nothing as such. तो भैया अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, अब मेरा क्वेरी चालू होगा. अभी तक सिंपल है ना? अभी कितना अच्छा सा दिख रहा है ना, ये कितना क्यूट है. नो, मस्त फाइनल डेटा सब तुमने ले लिया. Now the first thing I want you guys to, considering you have done this and you have this data frame ready with you guys, I want you guys to do next job. Sir, क्या? People, best of luck for this. LOC and all मैं दिखाता हूँ, deletion मैं दिखाता हूँ, दोस्त addition मैं दिखाता हूँ. Don't worry. बहुत सिंपल सा है, del कमांड से हो जाएगा, बट पहले ये कर लेते हैं. अब what I want you guys to do, people, best of luck. अभी तुम्हारे पास है, उसमें है, तुम्हारे पास है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, झाड़ू बनी, दूसरा रेड मार्कर ला, कॉन्टैक्ट, देन वी हैव सैलरी एंड वी हैव टैक्स. तो ये चीजें तो है अपने पास. I want you guys to get me net salary. Sir, net salary क्या होगा? Simple. Is the salary minus the tax. Go ahead. आपके पास डेटा फ्रेम है, आपको कैसा करना है उसके एग्जाम्पल है. जिनका हो गया वो मुझे डन करके बोलेगा. ये सोचने के लिए और करने के लिए कुल मिला के सिर्फ 2 मिनट. समझा क्या करना है? आई वॉन्ट वन मोर न्यू कॉलम गोइंग है, नेट सैलरी, विच इज सैलरी माइनस टैक्स. मैं बहुत बार देख के जलते हैं, अंदर से आत्मा जलती है कि टैक्स इतना पे कर रहे हो तुम लोग और गवर्नमेंट उस टैक्स का कुछ नहीं कर रहा. बट ठीक है, कांट हेल्प इट, तुम लोग के साथ भी ये होगा. तो है okay. There are 21 odd people saying done. Waiting for others. Be quick. Given time, try everybody. Please try to code this so that तुम लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस है और समझे कि किस तरह से तुम लोग उसे वर्क करें. Good.
Sure. Now let's do this. I have odd 25 more coming in. Majority has done, I feel. Now going back to how we would be working. लॉजिक सिंपल है, टैक्स और नेट सैलरी का अगर बात किया जाए तो इसी कैलकुलेशन इसी लॉजिक पे हम लोग चल सकते हैं. I'm just adding one more column below this. So I say DF. Let's call it net underscore salary, which is given by, now be careful, DF dot salary minus DF dot tax. सर इतने में हो जाता है, देखते हैं चलो. So as we work with, as we operate, run this. No error as such, but sir result भी नहीं है, आ चुका है, result आ गया, store हो गया, सब हो गया, देख लो. You got name, contact, salary, tax and a net salary. और इसे सेव करना तो हम लोग को आता ही है. You guys can anytime save this and work with it without any problem, without any issue. So this is what we are trying to say. This is what we are trying to say by understanding the concept of how we work. तो बहुत easy हो गया यार, मतलब I really don't have to do anything. ये तो सीधा चल गया, मतलब सीधा operate हो गया. अब अगर ये सीधा operate हो गया, what if we want to just take some data out of it or a index based data out of it? तो अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा. अब बात करते हैं थोड़ा LOC पे. सर LOC क्या करता है? वेल वी क्लियरली न्यू वन थिंग अबाउट दिस कि भाई चाह के भी अमर, इफ आई इंटेंड टू से दिस वे, फॉर आई इन DF प्रिंट आई. सर ये किया हम लोग ने, वो खाली कॉलम का नाम देता है. हाँ यार, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल. तो सर क्या प्लान है? We can do this now people. One is let's check len इस पे चलता है क्या, जो कि चलेगा. याद दिला दूं, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बोलेगा. तो याद रखना, लिख लो, len will give number of records in a data frame. Len will give number of records in a data frame. Len will give number of records in data frame. Be very, very careful. Len will give number of records in data frame. Okay, so now let us try to go ahead of it. So sir, plan kya hai? Let's use this. So now I'm saying range range bracket len of DF. I'm going in steps, be careful. अच्छा, तो सर देखते हैं I क्या करेगा. सर 0 से 11 नॉर्मल है ना, आपने टोटल नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स का बात किया तो ऑब्वियस है ये बाकी का. ओके, अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स का मैंने बात किया तो लेट्स अंडरस्टैंड ये चलेगा कैसे, किस तरह से वर्क करेगा. तो नाउ बी केयरफुल, आई विल यूज LOC. सर LOC कैसे यूज करते हैं? DF डॉट LOC लोकेशन स्क्वायर ब्रैकेट आई विल गिव यू इंडेक्स बेस्ड डेटा. बट ये जरा इंटरेस्टिंग तरीके से देखा, जरा ध्यान से देखो. So it is giving one entire record at a time. Kunal, contact, salary, tax, net salary. Next. Again, Mahesh. Again, Swamish, Ashutosh, Saurabh, and so on to work into picture. तो यानी कि सर ये एक का डिटेल उठा के दे रहा है, एक का डिटेल खींच के दे रहा है. That is what we are talking about. तो सर, what if I just give this way? वो सेकंड पूरा रिकॉर्ड तुमको देगा. ओके, तो अगर मैं बात करूं DF डॉट LOC ऑफ 3 डॉट NAME, फिर ये तो डबल टिबल रिकॉर्ड्स हमने कर दिया. सर ये कुछ और ही दे रहे हैं. सो बी केयरफुल. इफ यू रियलाइज इसने रिकॉर्ड क्या दिया, इट हैज गिवन यू प्रैक्टिकली रिकॉर्ड ऑन नेम. अगर मजे का बात है, अगर तुम लोग टैक्स भी दो
कांग्रेट्स। सो अगर मैं इसी तरह से तुमको नेट सैलरी दूं, your records are there, but then you'll have to access it one at a time manner. Again, name coming into picture. Sir, 3 दे रहा है वो, जबकि बाकी का डिटेल बराबर दे रहा है. That's one question which you guys need to find on your own. क्यों और कैसे? सर अभी भी 3 ही दे रहा है सर वो. क्यों, कैसे, कहां से? See, if I say बराबर दे रहे हैं, तो इसको क्या प्यार है एकदम, you know, to work into operation? That's one question you guys need to find out. If I give dot, in short, मुझे बाकी के options उसमें से मिलेंगे जो भी मुझे चाहिए, but सिर्फ name वो क्यों print नहीं कर रहा? That's one question you guys need to handle. क्यों वो तो 3 कुछ print कर रहा है. यही चीज सर अगर 2 कर दूं या 3 कर 4 कर दूं तो 4 प्रिंट कर रहा है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ. ये आंसर तुम लोग को जरा सोचना है. बाकी के डिटेल्स तो हम लोग को स्ट्रेट अवे एक्सेस पे मिल रहे हैं. बाकी के डिटेल index would be 3 accepted, but why other things, contact, salary, name, tax are given, but ये क्यों नहीं मिल रहा? That is my question to be, or my question to be asked as such right now. सर वो खाली न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है क्या? डेटा टाइप का इशू। डेटा टाइप का इश्यू है तो can I do this then in that case? तो 0 दे रहा है मुझे. सर वही है, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है खाली. ओके ठीक है. सर That you, मुझे तो हाँ. नेम आया सर इधर. तो मुझे तो नहीं आ रहा दोस्त. So if I say DF, is coming dot LOC of 0 dot name. Again 0. सेम वही ऐसे किया है सर मैंने भी. So you guys need to find out क्या गड़बड़ है, कैसे है या क्यों हो रहा है. Currently coming back to my story. तो अभी तक हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऐसे समझा कि हम लोग कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, टैक्सेशन डाल सकते हैं, सब माना. ये तो पहला बात हुआ. वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट वन फैक्ट अबाउट इट कि भाई हम लोग इस तरह से. What if we need records? What if we need records in terms of certain range? Now that becomes LOC in a different way. मतलब ये बोलो अमर एक काम करना, 10 records दे दे मुझे. So under that case, even LOC is used. Even LOC is used in that way. So I'm just adding a column. Just a minute. So I'm saying df dot LOC colon 10. सर तो 0 से 9 लेगा ये. देखो, देख लो. अब यहाँ पे एक चीज बहुत केयरफुली तुम लोग को देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये नॉर्मल पाइथन से हट के आ रहा है. मैं 5 दे रहा हूँ, 0 से 5. कोई रिकॉर्ड का नंबर्स गिन सकता है प्लीज? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर सीन ऑन स्क्रीन? 6. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड? 5. मोरल ऑफ द स्टोरी समझा क्यों मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुम लोग से? अभी तक हम लोग ने जो किया है उसमें जब आप लोकेशन देखते हो वो उसे ओमिट कर देता है. यानी कि 5 दिया तो 4 पे रुकेगा, 10 दिया तो 9 पे रुकेगा. भाई संभाल के. DF works in a different way. So do mention this कि अगर LOC का बात करो ना people, this is up to us, be very very careful. अगर मैं बात कर रहा हूँ LOC start and step, इसके नीचे एक लिस्ट है and taken, ये अलग है, ये अलग है मेरे दोस्त, ये अलग है. Very very clear.
Okay. So now how things are going to work, how things are going to be operated. एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा लॉजिक है. हम लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट जो किया अभी तक एलओसी पे किया. एलओसी अभी तक हम लोग ने जितना भी किया था फिल्टरेशन में लास्ट एलिमेंट नहीं लेता था, बट मेरे दोस्त यहाँ पे लेगा. ओके, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटाबेस का अगर बात हो और इसका बात ना हो तो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा. इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टरिंग, व्हाट इफ आई टेल यू अमर आई वांट only people who has a salary more than 50,000 that requires filter. तो अब filtration कैसे करते हैं? Now people going back. Now we are putting filters. Let's try to work with the filters. Filters का concept क्या है sir? Simple. What if I want to tell you कि भाई मुझे एक particular ही salary range चाहिए या एक particular data ही चाहिए. तो एक तो बहुत simple सा चीज है जैसे हम लोग करेंगे या सोचेंगे. df.salary less than 25,000. ओके, एंड मैं रन कर रहा हूं, मजा आ रहा है मेरे को. जरा देखते हैं क्या होता है उसमें. नाउ इफ यू सी केयरफुली ऑन द स्क्रीन व्हाट हैज हैपेंड. ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू. सर इसका मतलब ही नहीं समझा. डोंट वरी, मैं हूं ना. ध्यान से जरा देखो, पहले 3 ट्रू है. आर दे सैलरी लेस देन 25,000? यस और नो? पहले 2 दिख रहे तुम लोग को, कुणाल और महेश दिख रहे स्क्रीन पे. लॉजिक समझा सर? तीसरा वाला फॉल्स है, इंडेक्स 3 इज फॉल्स. तीसरे पे जाके देखो, सर 50,000 है, उसको 25 से. ओके, कांग्रेट्स. बट सर ये तो सिर्फ ट्रू फॉल्स हुआ ना. हाँ, ये ट्रू फॉल्स हुआ. तो इसीलिए हम लोग को फिल्टरेशन थोड़ा अलग स्टाइल में करना पड़ेगा. तो सर अलग स्टाइल मतलब क्या करना पड़ेगा? You need to take details, but you need to put it under the filter. Sir, define under the filter मतलब क्या करना पड़ेगा? Let me help you off. तो अगर डिटेल्स चाहिए तो यही डिटेल्स तो मैं लूंगा, बट df स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मुझे अंदर डालना पड़ेगा df सैलरी. हाँ, सैलरी लेस देन 25,000. ओके सर, मतलब आपने एक रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड के अंदर कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या हुआ? सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशनल ब्लॉक डालो, दैट इज अ राउंड ब्रैकेट, एंड देन पुट df डॉट सैलरी इज लेस देन 25,000. तुम्हारा काम हो गया. न्यूमेरिकल वो सीधा 12,000, 14,000, 20,000, 23,000, 4 और 23,000 इतना उठा के लेके आया. एवरीबडी clear with this? Everybody clear with this? Yes. Okay. Simple. तुम लोग स्मार्ट लोग हो रहा है. I love you people. Super. अब एक सिंपल सा चीज मैं और दिखाता हूँ. What would be output of this? Salary sir, सबके salaries दिख रहे. Very good. Smart लोग. अच्छा. ये हो गया. सिंपल है. Okay, now my turn. You guys would be doing this after this. So sir, मतलब क्या दिखाया आपने? मैं जो दिखाना था दिखा दिया, छोड़ो. Now you people are smart enough. Print only records पहले ये क्वेश्चन समझो प्लीज. नीचे ले लेता हूँ, चाहिए तो यूटर हैश print only records who are getting salary less than average salary of employees. अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? if it is needed, find average giving you 2 minutes for this.
2 minutes for this. Yeah, chalo 5 minutes low, but I want everybody. People who are done can specify done. People who are done can specify done. 5 minutes timer is on as such. Tell me, how would you do that? How would you act? Okay, good, good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 people as of now has given me done. Still waiting. We still have 2 minutes 40 seconds roughly to go with it. Screen per around 240 seconds are still left. Think about it. It's not that difficult. You guys should be able to. Okay, more 10 people added. Waiting for others. I have given time so that everybody can try, mind you. Last 30 seconds.
चलो, my turn. So it's not that difficult. It's very simple to work with. तुम लोग को क्या करना है, पहले फिल्टर बना और फिर फिल्टर को यूज करो. Now, how would you do that if that's a question? Let us try to work and let us try to operate with this. So logic है पहला filter average. So if I say AVG is equal to sum of DF dot salary divided by length of DF, this will get me the average. So if you want to print that, be my guest, you can work with it. You can say salary is colon comma AVG. चलो work कर लेते हैं, play. So we got average salary is 42,620. We have said जिनको कम मिल रहा है इससे, average salary जो भी है उससे कम मिल रहा है, उन लोग के लिस्ट चाहिए. So I'll say DF square bracket DF salary less than the AVG of whatever we calculated and play. So these people are driving what, 12,000, 14, 20, 23, 23. यार उनको average से बहुत कम मिल रहा है. So can't help it. There's a list of people who are driving lesser salary than the average given. That is what we are trying to work with. That is what we are trying to operate. Simple yet important thing to work on. ठीक है. Now suppose sir उसी तरह से कोई हमको कहे कि what if I want all the records? तेरे पास record तो है, but अमर मुझे salaries के हिसाब से sort करते हैं. Again, this is a view based question. यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नहीं यार, sort with reference to salary, maximum, minimum ऐसे कुछ निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? So you always have a way of doing it. We always have a way of doing it. क्या करोगे? Now there are built-in method called dot sort underscore value. Sir क्या बोला? And sort underscore value. But here you need to specify on what basis. On what basis? तो तुमको ये देना पड़ेगा कि कौन से basis पे मुझे sort करना. तो I have to say by equal to single quote. Single quote. तो सर आप बोल रहे हो sort everything on basis of salary. हाँ. तो values. Sorry. We'll be working with values coming in. If you see now, everything is sorted. Everything is sorted in a such a way. But if you see one more thing, guys, have we changed index locations? No. Is this change going to be permanent? No. This is just a view of it. तो मैंने सब बोला सबसे highest salary भैया जय का है, who is getting 78,900 and सबसे कम salary बेचारे कुणाल का है जिसे 12,000 मिल रहा है. That is what we are working with. That is what we are working with. So yes, do write down this command. Dot sort values. तुम लोग values के हिसाब से work कर सकते हो. यहाँ पे mention कर सकते हो अलग-अलग चीजें. Sir, now मस्ती में sir, ऐसी मैंने जो इसमें name डाल दिया, तो क्या होगा? देखते चलो. If you see carefully, A, then G, J, K, alphabetic order. और सिर्फ एक ही नहीं, सारा अकाउंट ऊपर नीचे हो रहा है. Be very careful. Be very careful to work. Okay. So this is what we are doing. This is what we are operating as of now. This is what we are working. तो सर sorting हो गया हम लोग को. सर अगर ऐसे इच्छा हुई हम लोग को कि भाई डिलीट कर देना है या if I want to delete certain things, no, अब मैं code पे उतर रहा हूँ, यानी कि create update तो हम लोग को मालूम पड़ गया. Working we are ready with. What if I want to drop a particular data? सर मतलब इसको नीचे लेते हैं. तो this is my DF as if now. मेरा पूरा डेटा है, यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिख रहा है, as you guys can see. तो what if I say del of DF dot LOC of 1 and we're running it. So remember, you cannot. Okay, sir. मतलब सर ऐसे डिलीट नहीं कर सकते ना.
You cannot directly delete it. अब कुछ लोग फिर ये ट्राई कर, you cannot delete it, but if I use this, cannot attribute error tax. मतलब सर करना क्या है? When you talk about CERD operation, CERD talks about three things: how you insert the item, how you delete the item, and how would you work. Insert तो खैर simple है, but the question remains is how would you delete, how would you operate? That is all. Break, तुम लोग को ना break बहुत जल्दी चाहिए रहता है. Anyway, 2 hours. ठीक है. Take a 15 minutes break. I will consider 10:30, 10:45 will start. ऐसे याद दिलाते रहना because मैं एक बार flow में आया तो मैं रुकता नहीं. तो ठीक है, break के उस पार CERD operation and NumPy शुरू हो जाएगा. So we'll be working with that thing. Take a break, 15 minutes, roughly 20 minutes मिलेंगे, but 10:45 will be restarting. Okay. Thank you. चलो शुरू करते हैं. Now जो बात चल रहा था भाई, delete तो चल नहीं रहा था, तो अब मैं क्या करूं? Answer to that query, which जैसे पहले break मांगा गया था मुझसे. So the question answer is very very simple. Delete won't work because we have a dedicated command called drop. Sir, drop क्या कर सकता है? Well, it is used to drop values or used to drop. जैसे तुम लोग के, if you guys realize, if you work with databases में drop होता है. यहाँ पे भी वही concept है. मतलब sir drop यहाँ पे भी होता है. We'll be also working with drop in terms of operation, in terms of working. So drop क्या कर सकता है, कैसे चलता है, क्या? We'll be going that things in detail to work with. Let us try to understand क्या, क्यों, कैसे और किस तरह से हम लोग इन सब चीजों को ध्यान दे सकते हैं. So people, please make it a point that you understand all that. So just going with it. Just a minute. So when you talk about drop, let's understand ये कैसे कैसे चलता है, किस तरह से operate करता है. So how would we work with drop? People, pay attention. Drop एक command है जिसमें 2 versions आते हैं. ये एक ही command है जो row और column दोनों को delete करने के लिए काम आ सकता है. Changes in place किए तो permanent होगा, in place नहीं किए तो temporary होगा. Sir क्या करवा रहा हूँ जरा समझो. Now when you tend to talk about drop works in a very attractive manner क्योंकि drop का एक ही sequence है जो तुम लोग 10 जगह पे use कर सकते हो, but that is up to you how you want to put it, how you want to portray. मतलब सर क्या बात कर रहे हो? Okay, let me use this command. ये command जरा लिख लो, पहले जरा समझ लो. People, please understand this carefully. We have dot drop command. अब dot drop क्या होगा? किस तरह से करता है, किस तरह से चलता है, how we work with, how we operate with. We use dot drop. Drop में कुछ options है, जरा ध्यान से. सबसे पहले label. अब कौन सा label use करता है, किस तरह से use करेगा, ये आपको specify करना पड़ेगा. You can specify either the name और the index. ये आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए. Name or the index can be given. Name or the index can be given. क्या, क्यों, कैसे वो मैं समझाता हूँ. इसके अलावा after this you will be also talking about a thing called access. Sir, access in terms of ये अगर 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, दो में से एक होगा. फिर आगे जाने पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है कॉल्ड इन प्लेस. ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. पहले शांति से इसे जरा समझते, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. अब क्या क्या चीजें नई है या काम की है अगर बात किया जाए. We talk about 0, we are talking about row. We talk about 0, we are talking about row. Only red is creating some issues. So if we are talking about, it is row. If it is 1, it is talking about column. So row और column उसका बात कर रहा है पहला. तो 0 row है, 1 column है. Now अगर in place true रहा तो हम लोग बोलते हैं changes in current. Changes
इन करंट, मतलब करंट डेटा फ्रेम में ही होंगे। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, यानी कि टेम्पररी चेंजेस, परमानेंट नहीं होंगे तुम्हारे, टेम्पररी होंगे, बाद में हट जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये रिटर्न करेगा रिजल्ट, बट खुद में चेंजेस नहीं करेगा, ये खुद में चेंजेस करके चुप हो जाएगा। दैट इज हाउ वी आर गोना वर्क विद। सो दिस इज फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद। ये पहले लिख लीजिए, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन एवरीबॉडी। लिख लो। Then I'll start showing you क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस तरह से हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। So people, that's secondary. Everybody done? अब बात आता है भाई समझने का। अगर consider this way, if I want to precisely delete row number, some particular row, so if I talk about row, हर रो में अपना एक लेबल था। If you remember, there was a label जो इंडेक्स की तरह हम लोग यूज कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट का बात कर। तो अब अगर मुझे डिलीट करना है, आई कैन से इन आवर केस df डॉट ड्रॉप, मेक सेंस। क्या करना है भाई, तो मैं बोलूंगा लेबल इक्वल टू 0। सर 0 मतलब पहला होगा नहीं, लेबल्स इज इक्वल टू 0, ls है labels, followed by, since I am talking about row, एक्सेस वाइज आई विल बी सेइंग 0। मैं इन प्लेस नहीं रख रहा, तो ठीक है सर, एक्सेस 0, लेबल 0, तो ये क्या करेगा, 0th रो गया, डिलीटेड। दैट्स हाउ सिंपल एज इट इज। सपोज सर मैं आपको बोलूं पहला रो, तीसरा रो, चौथा रो, ऐसे कुछ डिलीट करना, तो देन द फिनोमेना बिकम्स df डॉट ड्रॉप लेबल्स। इस बार लिस्ट बनेगा, मैं बोलेगा पहला कॉलम कर, फिर 5वां और फिर 7वां डिलीट करते हैं। एक्सेस डोंट फॉरगेट 0, ये आपको देना पड़ेगा बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑन रो, यू आर टॉकिंग अबाउट रो। What if I want to delete a specific? What if I want to delete a specific target? सर मतलब एक रेंज चाहिए कि 0 से लेके 1 तक का, या 5 से लेके 6 तक का, या अल्टरनेट डेटा डिलीट करना। ड्रॉ लेबल्स। अब जब लेबल्स दोगे ना, तभी एक फंडा डालो। इंस्टेड ऑफ दिस यू विल बी वर्किंग विथ फॉर लूप। पर फॉर लूप का कौन रेंज, आई कैन से 0 से लेके 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 तक चीजें डिलीट करो। अगेन एक्सेस इज 0। दिस इज हाउ यू वुड बी रिमेम्बरिंग। इसके शॉर्टकट फॉर्म्स भी है, बट आई वुड प्रेफर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। सर 0th रो, फर्स्ट रो, 5th रो एंड 7th रो, 0 से लेके 5th तक, ये एक एक करके जरा प्रैक्टिस पे लाते हैं। Let us try to work it, let us try to operate it out, okay? So you guys are free to parallelly work with it, I don't mind. तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भाई, मैं पहले df में इन प्लेस नहीं करूंगा, वरना मेरे पास डेटा ही नहीं बचेगा कुछ करने के लिए, तो मैं इसलिए नॉर्मल वर्किंग पे ला रहा हूँ। तो df, ओके, ये सारा डेटा है तुम्हारे पास। ड्रॉप labels is equal to 0, axis is equal to 1, रो वाइज चाहिए, देखते हैं। So what we did wrong was df 0 not found. X is equals to 0. Axis 0, sir. For X is equal to 0. Column. हाँ, sorry. So let's work with it. सर कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा। If you see Kunal has been deleted. If I want very precise, चलो नंबर 3 को मैं टारगेट कर रहा हूँ,
As you can see, आशुतोष है उड़ाते. If you can see 2 3 good. But sir, ये तो हर बार एक जा रहा है एक आ रहा है. मैंने in place नहीं किया. 7th will go off. 6 and 7. If you say गौरी के बाद सीधा जय आ गया, बीच का एक डेटा चला गया. So that is one way. तो सर अगर इसको परमानेंट स्टोर करना तो you can always do this, or you can make in place is equal to true. ये आप पे है. तो that is I leave up to you guys. मैं वेरिएशंस दिखा रहा हूँ. तो मतलब सर ये 7th को करेगा. फिर आपने क्या बोला था सर, जरा वापस बोलो. मैंने बोला था I can actually tell you 1 4th and 9th. जरा देख लो, नीचे रिकॉर्ड है. 1 महेश है, 4th सौरभ है, 9th कौन है, अरिहंती. बेस्ट ऑफ लक. कुछ हुआ दिखा, कुछ हुआ क्या रे पीपल? यस नो people with me got something? What happened? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Thank sir. you. Better. Thanks. यानी कि 1st 4th और 9th सर सही है. ये तो मतलब हम लोग पकड़ के एक एक को उड़ा रहा है. अच्छा, what if we work this way? Range 1,4 and running it. कुछ फर्क पड़ा? 1 से 3 1 2 3 उड़ गया. Everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, your job starts. Best of luck. I want to create 2 table. अभी DF है मेरे पास. तो मेरे दोस्त मुझे चाहिए DF even, keeping only even columns or even rows, and DF or, keeping only odd rows. तुम लोग को 2 डेटा फ्रेम बनाने हैं, एक DF में से. एक DF में से कुछ होता है. अंजलि करो, फिर मैं कॉलम्स के पीछे पढ़ता हूँ. दे आर वेरी सिंपल, बट ये रोज के पीछे पहले खत्म करो. पहला दूसरा तीसरा कौन सा फॉर्म यूज करोगे? पहला दूसरा तीसरा कौन सा फॉर्म यूज करोगे? तीसरा. वेरी वेल. सो इट्स ऑल गेम ऑफ रेंज सर. वो रेंज का ही काम है, बराबर है. अब कैसे यूज करोगे, दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू सी. think. Everybody done? Smart job, Malkid. Good. It's not that difficult. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. बहुत छोटा सा कोड है. क्या किया? रेंज में से खेला. एक 0 से चालू होगा, एंड तक जाएगा, स्टेप 2 का दे दो. एक को 1 से चालू करो, एंड तक जाएगा, स्टेप 2 का दे दो. So ultimately the joke is where I'm going to start from and where I'm going to end. That is how we are going to work with. Everybody done? I feel should not be difficult for you guys. तो ये तो खैर मैंने ड्रॉपिंग का बताया in terms of rows. So मतलब सर you can actually have various options, right? अब जितना इसके अंदर जाओगे ना guys, उतने variations है. I would like us to stick to this way. क्यों? इसका शॉर्टकट वर्जन भी है. डायरेक्टली 0 दो, डायरेक्टली
बट उसमें क्लियरिटी ऑफ थॉट कभी नहीं आएगा कि क्या क्यों और कैसे हो रहा है। तो आई लाइक टू स्टिक टू दिस, आई लाइक टू स्टिक टू दिस। अब यहाँ पे एक खास प्लीज याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट रो, तो एक्सेस के साथ खेलना आपको संभाल के पड़ेगा, एक्सेस के साथ खेलना। अब अगर कॉलम का जाए, इट्स मोर सिंपल, इट्स मोर सिंपल। सो अगर ये हो गया, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आई एम शिफ्टिंग टू कॉलम्स नाउ। ये हो गया सबका? ओके, see in place is not going to change, axis is not going to change, this thing is slightly changing. सर क्यों? अब मेरे दोस्त मैं बात कर रहा हूँ पूरे कॉलम का यार, तो थोड़ा बड़ा गेम है। तो अगर थोड़ा बड़ा गेम है तो क्या बड़ा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे मालूम है कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप करना, कल से लेबल्स इज इक्वल टू, ना अगर मुझे मालूम है कॉलम एक ही है, सीधा नाम डाल दो, नेम ऑफ कॉलम, जो भी आपको चाहिए, एक हो तो सर ठीक है। उसके बाद एक्सेस डोंट फॉरगेट, अब एक्सेस 1 आएगा, जैसे तुम लोग ने लास्ट टाइम कवर किया मुझे, सर एक्सेस संभाल के, मतलब सर जो भी नेम ऑफ द कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। सर 2-3 करना है तो इट्स नॉट गोना चेंज गाइस, एक एक देते जाओ, 1 2 एंड सो ऑन। सही, मतलब कॉलम्स तो चल जाएंगे, 1 2 3 होते जाएंगे। अब सर इसमें इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसमें अल्टरनेट और रेंज नहीं चलेगा, बिकॉज ये नाम, ये टारगेट कर रहा है नेम ऑफ द कॉलम। सो डोंट यू नो change anything. We are very precisely telling you here these are the columns which we are planning to drop. These are the columns which we are planning to drop. So be very careful. तुम डायरेक्टली कॉलम का नाम दे दो, वर्क करो और ये ऑपरेट कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग जिसका आप बात कर रहे हो, दिस आर द बेसिक थिंग्स। By dropping column, are we talking about deleting all the records? I would like to say this way, we are deleting all the records pertaining to given column. यानी मैं अगर टैक्स डिलीट कर रहा हूँ तो हर रो का वो टैक्स वाला कॉलम ही उड़ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर डेटा रेफरिंग फ्रॉम इट, गेट दैट थिंग क्लियरली। जो मैं बोल रहा हूँ करके भी देखते हैं, इट वोंट टेक मच टाइम, दिस इज मच सिंपलर। सो पीपल गोइंग इन, इसी को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। सो अगेन एक बार दिखाने के लिए मुंह दिखाई, डीएफ सब है। सर एक काम करो ना, कॉन्टेक्ट पब्लिक मिसयूज करता है, ड्रॉप इट, ड्रॉप लेबल्स इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट एक्सेस इज इक्वल टू 1 0। क्या डालू? 1 Let's play. Congrats, data is secure. एक झटके में। Now believe me, ये करने के बाद अगर जिसने थोड़ा भी डेटाबेस में काम किया होगा ना, who will like me will fall in love with this. Why? डेटाबेस में ये करना बहुत नाक में दम कर देता है, ड्रॉप, अल्टर, अरे और हर एक इसमें कुछ ना कुछ। So we like to stick to these things which are wonderful thing to work with. Everybody clear with this? Honda समझा? सबको समझा? Any doubt, any query with this? People clear? Worked with it? Any doubt, any query, anyone? Waiting? People clear with this, I feel? Yes, no, I'm still waiting. People clear? People clear? Okay, better. Good. Wonderful, love you guys. Okay. अब भैया ये डिलीट था, उल्टा करते हैं। Sometimes people fail in understanding. तुम लोग को कहा जाता है can you create a data frame without using a CSV? अब सिंस मेरा नॉर्मल ट्रेनिंग में डायरेक्ट में CSV दिखाता है, तुम लोग में से प्यारे लोग नहीं, क्यों? अमर सर ने थोड़ी दिखाया था, तो ऐसा तो होता ही नहीं होगा। तो भाई सेफ्टी के लिए ऐसा होता है पहली बार। सर कैन यू डू दैट? दैट मीन्स यस। What you have to do, another interview question which they change lovely in a way, what data structures would be used to create a data frame? अब पब्लिक महान हस्ती अगेन अपना पहला एग्जांपल का रेफरेंस लेके आता है, सीरीज। बी केयरफुल, इसे खेलने के लिए तरीका थोड़ा अलग है। इट इज द डेटा स्ट्रक्चर। अगर कोई तुमको बोले कि बना के दिखाओ,
there'll be two data structures needed. We'll be using dictionary plus list. Sir, क्या लिख के रखो. In order to create a data frame, one can use combination of dictionary and list. One would use combination of dictionary and list. Dictionary and list. Dictionary and list. याद रखना. Dictionary और list का combination use किया जाता है. Dictionary और list का combination use करता है. So be very, very careful. Be very, very careful. Everybody clear with this? अब सर बोल तो दिया, करोगे कैसे? Okay, let me help you out. So again I'm going. Suppose मैं तुम लोग को कहूँ नहीं यार अभी का अभी मेरे को एक डेटा फ्रेम बना के दे. तो I'll be saying सिंपल तरीका है, लॉजिक लाइफ में बहुत सिंपल रखो. एक नया डेटा फ्रेम बना दो. pd dot data frame is what you will call. So you will say df new is equal to pd dot क्या बनाना है सर? डेटा फ्रेम. तो यूज करो. We'll say data frame. So you'll be creating a new data frame this way. हाँ. अब नए डेटा फ्रेम में क्या चाहिए? This I think people can understand. This is for dictionary. अब सर नाम क्या होगा? Roll number. Okay. Watch it. Combination समझा कुछ क्या किया मैंने? Anybody? Yes, no? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे. Dictionary and list. List. Just to work with it, just for the heck of playing it. अच्छा मतलब सर आपने बनाया डेटा फ्रेम. So I put it df new. Let's see look and feel for this one. सही सर ये तो बन गया. Congrats. So याद रखना अगर कोई तुमको पूछे क्या यूज करना पड़ता है, it is not list, not dictionary. It's a combination of dictionary plus the list. Dictionary plus the list. So this is how you can create, because many of us fail in understanding कि हाँ भाई हाँ तुम लोग एक डेटा फ्रेम बना सकते हो with a blank data also coming in from it. So should be simple, very should be simple. अच्छा सर एक क्वेश्चन है जो किसी स्टूडेंट ने आई थिंक मुझे पूछा है ऑलरेडी. सर एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम में डाल सकते हैं क्या? हाँ. डॉट अपेंड लिख के रखो, ये छोटी छोटी बातें काम आएगी. तो वी हैव डॉट अपेंड which will add one data frame to the other. One data frame to the other. But उसका एक छोटा सा रूल है गाइस. Structure should match. Structure should match. सर वरना NN not a data or not availability of number करके NN बन के वो ऐड होगा. मतलब तुमने जो कॉलम नाम यूज किए, कॉलम नेम्स वुड बी ट्रीटेड एज द मर्जिंग पॉइंट्स. अगर तुम्हारे टोटल अलग है, करके दिखा दो क्यों बड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. I mean, so easy not to say much. ये एक डेटा फ्रेम बना है df new. ओके मैं और एक कॉपी कर लेता हूँ इसे. Adding one more data frame. So data frame roll number ये सब वही रहने दो. इसको मैं summary and summary. चलो that's easier way for me. And इसको दे देता हूँ 2. This is executed just to prove my points कि भाई मैंने दोनों बना दिया है. df new 2 df. So we do have both coming into picture. So okay, let's play this way now. So if I say append not df, we have df new append df new 2, playing it, working it, and saying df new. Job done. But by saying this, the point I was trying to produce is changes are made, combined and left. तो अगर आपको करना है तो आपको तीसरा एक लेना पड़ेगा, बट दोनों चल गए.
अच्छा, now I'll show you the more important stuff. Everybody clear as such with this? Very simple है. Any doubt, any query, anyone? सर लेवल तो रिपीट हो रहा है. दिखाने दे. कहाँ दिखा रहे तुझे? 012 हाँ, that is because मैंने सिर्फ दोनों को combine कर दिया ना. Okay, so append, don't forget that is, as you very rightly said, label है ना, तो हर एक का अपना खुद का लेबल तो रहेगा accessibility के लिए. Clear? So if you work with df2 equal to, okay, let's pull. समझा? उसमें भी ये देख मेंटेन रहता है कि उनका लेबलिंग है, उसको फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. दिखा तो आगे. सो करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट अपेंडिंग. फाइन फाइन सर, परफेक्ट. अब अगर मैं तुमको कहूँ आई वांट टू क्रिएट इसी डेटाबेस में, अगर किसी ने ऐसा गलती किया है, क्या होगा? दैट इज व्हाट आई वांट टू पोर्ट्रे नाउ. सो समझा क्या करने जा रहा हूँ? कॉलम का नाम अलग है, कॉलम का नाम अलग है. So seat number is, let's make it simple, 1122, and we have 333 coming into picture, and we play again. अब अगर मैं कहूँ df2 df3, चलो ये तो हो गया. अब इस df जो तुम लोग ने df2 बनाया, append df new 3. So if I play, कुछ लॉजिक समझा क्या हुआ? ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखो. Now instead of having roll number, name and another thing added, seat number. अब नीचे वाले के पास सीट नंबर तो है, बट उसके पास रोल नंबर नहीं है, तो NN नॉट अवेलेबल. एंड सीट नंबर पे NN, बिकॉज पहले 6 रिकॉर्ड्स के पास नहीं है. दिस इज हाउ. तो मतलब सर आप अगर मल्टीपल तरह का डेटा डालते गए तो दिस वुड रिमेन. फर्क है जहां पे मेरे पास डेटा नहीं है मैं वहां NN डाल दूंगा, जहां पे डेटा है वहां पे डेटा रख लूंगा. तो दिस इज अनदर एडवांटेज और अ बिगर एडवांटेज व्हिच वी गॉट. क्यों? अपने को कुछ चाहिए ही नहीं ना, सारा डेटा हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं कि भाई सारा डेटा आने दो, जहां डेटा नहीं है NN डाल दो, जहां डेटा है वहां डेटा डाल दो. अपना काम तो सीधा हो रहा है. एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पार्ट? एनी डाउट, एनी क्वेरी? वापस मैं स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ. कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन पूछ लो. पीपल थिंक अबाउट इट. इफ यू वांट, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन आल्सो, सो दैट मालूम पड़े क्या हो रहा है. People, do think about it, please. अभी इसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं ना कर सकते सर? नहीं, अभी भी चलेगा, बट इंडेक्स में मारामारी चालू हो जाएगा. तो 0 देगा तो अलग अलग चीजें एक्सेस करेगा वो, क्योंकि हर एक के पास अपना है. समझा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रीफॉर्मेटिंग होगा. दैट विल डू, डोंट वरी. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट working with this, be very very careful, be very very clear. And by the way, NN किसी ने पूछा नहीं, it's not a number, तो लिख के रखो. वो इंटरव्यू में सडनली तुम लोग को पूछ लेते हैं NN and you get confused. पांडास, नमपाई और मैथ में NN यूज किया जाता है, याद रखना. NN is not a number because मेरे पास अगर डेटा नहीं है तो मेरा एक्सेस में तकलीफ होगा. Similarly, as he very rightly asked, if I work with, this is quite interesting thing to see on my screen, guys. So if I say now df2 dot drop labels is equal to 0, एक्सेस कौन सा डालू, 1 डालू या 0? मुझे रोज टारगेट करना है, क्या करूं? 0 या 1? 0 मज्जानी लाइफ. कुछ समझा क्या जोक हुआ? उसने हर उस लेबल को जो ये पूछ रहा था, हर एक लेबल को फॉर्मेट करके उड़ा दी. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. इज इट सो? यस सर. मेरा स्क्रीन तो शेयर्ड है. अब हुआ है.
अब हुआ ओके हो सकता है तो नो इश्यूज अब दिखा देगा अभी जो कमांड है उसका ही मैं बात कर रहा हूँ सो द फंडा विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज जीरो जिधर जिधर था सब उड़ा दिया उसने तो यहाँ पे अब यू नीड टू बी मोर केयरफुल टू वर्क विद क्लियर उसी तरह से लेबल्स में अगर तुम लोग नाम दोगे किसी एक व्यक्ति विशेष का अगर एक्सेस के जगह पे लेबल्स का बात कर रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल फिर तुम लोग को सर्च करके डिलीट करना पड़ेगा उसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है बट अगेन दिस इज व्हाट स्टेज 1 इज अबाउट तो यहां तक तो हम लोग ने सिर्फ क्रिएट करना ड्रॉप करना डिलीट करना सर insert append कैसे करोगे now that's a fun part we are very smart and simple in working with it dot append is what you will use to insert dot append is what you will use to insert but sir एक बात बोलो dot append से insert कैसे होगा अरे भाई पूरा डेटा फ्रेम ये ले रहा है तो तुमको कुछ तकलीफ है ये नहीं ले another option of working which he asked कि sir what if I want to give some data coming into picture अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कॉल एज इंसर्ट आपको कॉलम इंसर्ट करने देगा पूरा का पूरा so that is one thing another is you can work with data frame and append data to it सर मतलब एक एक करके डेटा अपेंड करो और वर्क करो और ये इंटरव्यू वाइज दे जनरली टारगेट कि किस तरह से तुम लोग अपेंड कर दोगे तो तुम लोग को एक चीज याद रखना we would work with dictionary and the list अगर तुमको कुछ भी ऐड करना है existing database में how would you work how would you operate it's a very simple thing मैं खुद बोल रहा हूँ तुम लोग डिक्शनरी यूज करोगे और वर्क करोगे कमांड ऐसे कुछ आएगा अपेंड ब्रैकेट ये तुम्हारा डीएफ ही है तो इसी डीएफ में अपेंड होगा उसके बाद डिक्शनरी में कुछ करोगे नाउ आई वांट यू गाइस टू थिंक ऑन दिस कि भाई मुझे जो भी करना है जो भी ऑपरेशन करना है वो कैसे करेगा सिर्फ एंड में एक नया चीज आएगा जो आपको लिखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज इग्नोर इंडेक्स सर क्या क्या वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड कि सर वो लेबल अगर हम लोग कुछ चेंज करें तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा सॉरी ट्रू आएगा बिकॉज फॉल्स नहीं मुझे नहीं चाहिए तो ट्रू बट यहाँ पे क्या लिखोगे आई वॉन्ट टू थिंक करंट एग्जाम्पल ही ले लो जहां पे तुम लोग को रोल नंबर और नाम दो चीजें इंसर्ट करनी है तो हाउ वुड यू राइट दिस हाउ वुड यू राइट दिस कम ऑन once this is done we are done with pandas so we can then stop and then jump into numpy ये कैसे करोगे अपेंड से ही होगा इंसर्ट भाई स्ट्रक्चर के अनुसार अपन इंफॉर्मेशन फिल करेंगे सॉरी वापस बोल दो स्ट्रक्चर जो अपना डेटा ओरिजिनल डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे भी डेटा इंसर्ट कर लिख देंगे बराबर बट कैसे लिखोगे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट ट्राई करो कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट डिक्शनरी इंसर्ट एंड करोगे तो कॉलम इंसर्ट होगा सर हम वैसे ही कर सकते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्शनरी एंड लिस्ट जैसे पहले किया गिवन यू 2 मिनट्स थिंक अबाउट इट ट्राई करो बट मुझे यूजर से इनपुट लेना है माइंड यू थोड़ा चैलेंजिंग करता है आई वांट यू गाइस टू गेट इट एट यूजर इनपुट sorry I want it from the user but should insert in a current data frame सिर्फ सीट नंबर और नाम ले लो मुझे और कुछ नहीं चाहिए people who are done mention done and send me the code on chat
Okay, I'm back. Sorry for the delay. Okay, let me get. Smart move, smart move, smart move, smart move. Sahil, good. Think even Prakshit has done similar. Good. I feel people got the point. Input user से लो, put it in a dictionary and club it with dictionary. वो खुद ब खुद insert होते जाएगा. जितना append करोगे उतना data आते जाएगा. तो हम लोग को insert आ गया, working आ गया, tabular form में operations आ गए. These are some of the things which you will be doing. तो तुमने filtration समझा, लॉजिक प्रोसेसिंग समझा, उसे किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें समझी. सो नाउ दिस इज व्हाट पांडा इज अबाउट. सो इज इट ओवर? I would say we have extensive 12 hours 15 hours only on panda. तुम लोग को तो भी उसका मैंने ना समरी एकदम शॉर्ट में करके लाके दे दिया है. कीप इट विथ यू गाइस. क्यों? आगे जब जाओगे आपके सिलेबस में, आगे जब जाओगे अलग अलग चीजें सीखने में, तभी पांडास वापस सामने आएगा. उस टाइम पे सिर्फ nobody is going to teach you how panda is going to work. People will directly say panda has this capability. So my point over here was to make you aware कि भैया pandas क्या है वो पहले दिमाग में डाल लो, so that once somebody uses it in future तुम लोग को ये नहीं लगे ना मैं मस्ती में बोलता हूँ, अंदर से फील ना हो कि नया है वह. You should know what panda is and how we work with it. Any doubt, any queries about formatting and other things? You guys would be doing it ahead. Don't worry. But more than that, जितना समझा उसमें कोई concept, कोई query? Okay. Part 2. So I'm just वरना एक ही recording में रुको. Stop करके restart करो so that it goes as a new topic.